एसोसिएशन टेलीकॉम, TEMA, CMAI, CSAI प्रेसिडेंट वगैरह में आज गुजरात की पावन भूमि में आप सब आए, आपका धन्यवाद। आपके लिए मोना जी का धन्यवाद कि वो उनको नीचे रहते हैं प्रोग्राम से और उन्होंने हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि एक हम साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। आज का प्रोग्राम आपके प्रोग्राम से थोड़ा अलग होगा और मुझे लगता नहीं है कि कोई आदमी प्रोग्राम छोड़ के जाएगा। जनरली जब हम प्रोग्राम करते हैं तो अगर होता है 2 घंटे तो 4-5 घंटे तक बच्चे लोग छोड़ते रहेंगे। जस्ट होप कि आपको अच्छा लगेगा। हम प्रोग्राम को शुरू करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे आपके HOD 10-15 से आए डॉक्टर दीपक जो हमारे डायरेक्टर है CSAI के, नवीन धाम, प्रोफेसर समीर एंड अभिषेक जी प्लीज कमेंट कर रहे हैं। हमारे एक और कोलीग है मिस्टर ईशान, ये बिल्कुल ब्लैक गर्ल, ब्लैक कैट, ब्लैक डॉग, ब्लैक कैट सब में रहते हैं, ये पर्दे के पीछे रहते हैं। आइए प्रोग्राम की शुरुआत में हम ट्रेडिशनल भारतीय सभ्यता से अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं। तो मैं आपको सॉल्व करता हूँ। डॉक्टर दीपक है हमारे डायरेक्टर, बहुत बड़े साइबर एक्सपर्ट्स हैं, उनकी डिमांड वर्ल्ड में रहती है और उनको आज मेरे पावर के लिए आए। नवीन धाम आपके बारे में अगर मुझे पता देंगे तो आपको अच्छा होगा कि यह कैसे करें। ये दोनों आपके प्रोफेसर हैं, आप करते हैं। Thank you very much। और 11 हम ये बताना चाहते हैं कि आज का जो टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी नेचुरली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो साइबर के बारे में है ना जानता हूँ, और जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा नहीं जानते। साइबर अवेयरनेस होनी चाहिए। हम सब ने साइबर एक्सपीरियंस लिए होंगे, हम सबके साथ कोई फ्रॉड नुकसान हुआ होगा। आज का प्रोग्राम उससे नहीं मिलेगा। हम स्टार्ट करने के लिए बोलेंगे तरह से thanks to the students that come here. I just hope that the auditorium has been full, but whatever we can get, I think we should spread the message. See, in today's day and age, right, a lot of our identity is digital, right? Not just of the individual people, but even of the nation. Right? A lot of nations' assets are digital. So today, tomorrow's security, tomorrow's defense, tomorrow's warfare will not be conducted on the ground mostly. Large action will be conducted on the information space. It is very, very important to understand the basics of cybersecurity. What are the trivial things that can happen to us? What are the trivial ways in which our identity can get stolen, our assets can get stolen, and what are the more complicated ways? Right? Because today with this Indian AI on both sides, this is basically a cat and mouse game.
spoke in Yahoo in the audience chat, right? And there one of our tasks was to interact with whatever the kind of thing. That is basically the cybersecurity, right? And things would happen, for instance, a senator's email address gets stolen, right? And vast number of emails will come out of that. And quickly you would have to do something about it, right? So basically there's a lot of these kinds of issues that might seem sort of that these are only technical issues, but they're not. They can have very large impact in terms of the society, in terms of the overall international relations everywhere. So I thank the organizers for organizing today's session, and I'm sure we all will benefit from it. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. आज आने वाले आपके पास मिस हपीशा, उनको इस तरह से कल एक्सीडेंट हो गया और अच्छा लग गया है, तो उनकी जगह अच्छे स्पीकर और डॉक्टर दीपक हैं और रिक्वेस्ट है। Good morning, I am this. So it is I am very possible. Hello? Hi, good morning. Good morning. Good morning. This is the first time I have seen people from audience here. And thanks for coming here. I won't take much time. The session today is really important. I believe it's like an alarm. I know you came from different perspectives, you do different things in the study perspective, but I am here to tell you something which may be helpful for you. And I'm sure maybe it's not helpful for today, but it will help for in future time. And the topic, the subject which I'm going to talk, that is on cyber security and cyber awareness. And thanks to Goyal sir who invited me in this platform and IIT and these speakers and the guests over on the rise and you. The point here is that the content which is being posted online, I know everyone is using Instagram, Snapchat, social media, yes or no? And we have seen that. Many person, many students, many parents, relatives, they try to do cybercrime, bunch of thoughts and different things. If you heard about a lady named called Moona, who said drum mein husband who yes or no? But the question is that there is some sort of digital
missing, there is called the local exchange principle is there कि कुछ गलती अगर हो जाए तो आपको पता ज़्यादा नहीं होंगे. तो the point is that the digital footprint which we are talking about, which is on social media, that is very simple to catch, simple to track, simple to trace, and then when it comes under the national security perspective, so any data which is on social media or on any platform that can be traced. So my point is that when you go to the document and post online, the data is very important. Suppose हमें सोचे कि हम Snapchat पे स्टिक्स भेज रहे हैं या फिर Instagram पे वैनिश मोड में चैट कर रहे हैं, तो you just assume that you and that person is only in that mindset कि चलो ये कोई नहीं देगा, third person नहीं दे पा रहा. But that is very clearly a forensic perspective. Every data, everything is stored somewhere. It needs some memory, allocation perspective. So some data will be there, when it comes to who is chatting with who, what it has been shared, that is traceable there. So the friendly cyber perspective, we have jargon word which is there, cyber or information. The body called information, the umbrella basically. And then you have digital things, hardware, you have software, you have different elements. आप किसी भी जॉब में जाइए, आप किसी भी स्टार्टअप में जाइए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाइए, या किसी भी फ्यूचर के किसी भी तरीके से या किसी भी सर्विसेज में आप वर्कआउट करिए, I'm telling you, digital computer or this cyber information ये हमेशा कनेक्ट करेगी. आप उसे ये कह सकते हैं कि हमारे सब्जेक्ट को आता नहीं है. It is always connected with your things. It will be in any manner. But now coming about the crime perspective, ये सारा जो cyber है basically cyber crime से भी related हो रहा है. You heard about this case, रश्मिका मंदाना case? Yes or no? तो हमें इसका एक शायद पॉजिटिव साइड मालूम है, नेगेटिव साइड मालूम हो कि ये कुछ वायरल हुआ था, डीप फेक. तो एक बड़ा था डीप फेक. अब डीप फेक ये एक चुनौती है, बेसिकली इशू है साइबर के लिए इंडिया में, इंटरनेशनल लेवल पे. और नो डाउट अभी मैं सर की बात करता हूँ या किसी की बात करता हूँ, आपकी बात करता हूँ, someone use your public platforms based photo which is you posted online and they use some sort of online platform like Vimeo and all, or you can say any platform, they can misuse those photos for any malicious perspective. आप ऐसे कीजिए कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है. हालांकि ज़्यादा प्रॉब्लम्स की बात फीमेल्स के लिए है, मेल्स के लिए कम होती है, बट मेल के लिए भी इशू होता है जब इसकी कुछ एक इमेज होती है, साफ होती है, रेपुटेशन होती है किसी सोसाइटी में. So point is that the person called this person, this blue star, this person, he is also a student and he used this technology and he used this technology for learning perspective. तो आता नहीं वीडियो में कि मैं जो हैकिंग दिखा रहा हूँ ये सिर्फ स्टडी पर्सपेक्टिव. कभी हैकिंग करके ये चीजें मतलब ये जो चाकू मारना है, हथौड़े से फोड़ना है, कभी एक वेल नोट के लिए हो सकता है, अच्छे काम के लिए हो सकता है, जब इंटेंशन क्लियर हो कि बचाने के लिए जा रहा है कि तोड़ने के लिए जा रहा है. My point is that the same person will be saying wanted to create a video and that video was a deep fake video and not create a negative sentiment for the society. Similarly, what happened that this content which is there, which is linked with cybercrime, which is linked with these elements, these are the age group for this all parameters around 22 to 32. मतलब 20 से 30 साल के एज ग्रुप में अक्सर वो लोग इसमें ट्रैप हो रहे हैं, वो लोग इस चीज को कर रहे हैं और ये चीजें कहीं ना कहीं साइबर क्राइम पे वर्कआउट होती हैं. साइबर क्राइम होता क्या है? सिंपल विच इज वायलेट्स, जो वायलेशन करेगी इस चीज को लेकर, जहाँ पे अक्सर इलीगल एक्टिविटी जहाँ पे कंप्यूटर जैसे डिजिटल डिवाइसेस का यूज किया गया हो, मोबाइल किसी भी एंगल में, और व्यक्ति भी हो सकता है, किसी के खिलाफ भी हो सकता है, किसी भी संस्था के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए, किसी प्राइवेट एंटिटीज के लिए. और हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं, हमारे माइंड में कुछ ऐसे बिल भी होते हैं कि हमें लगता है कि वी आर सेफ. कितने लोगों को लगता है कि हमारा पासवर्ड जो है अगर वो 10 डिजिट से ज़्यादा है या फिर लंबा है या फिर स्ट्रॉन्ग है, दैट इज सेफ. पासवर्ड जनरल सेफ. अगर आपका कंप्यूटर कंप्रोमाइज, मोबाइल कंप्रोमाइज है, अगर आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट या फेसबुक के अकाउंट पासवर्ड सेम है, जीमेल का भी सेम है, और आपके ईमेल का भी सेम है, तो अगर कोई एक ईमेल का पासवर्ड हैक हुआ तो कैन हैक with the second one. So what is safer reason? Safer thing which is very important. So similarly we talk about the safer part, that is two-factor authentication. ऐसे काफी ऐसे एंगल्स हैं जहाँ पे समझने के लिए we should know about the reality. एक भी और भी है कि हमारे पास एंटीवायरस है. We have good antivirus, we have good
firewalls in our system and everything is safe. So don't assume that if antivirus is there, it can be safe. Because antivirus will protect from those viruses, those जिनके signatures, उनके information पहले available हो, तो चीज़ information available नहीं है, zero day है, तो कुछ ऐसी information है जो तक signatures आई ही नहीं है. So sometimes this information may be misused for hacking perspective. You heard about few days back there is a viral news कि WhatsApp पे कोई image भेजेंगे तो आपका WhatsApp account hack हो जाएगा. You heard about these things? अगर आपने नहीं सुना है तो सोचो आप कितने vulnerable और पीछे हो चुके हैं. Means suppose somebody send you an image and maybe your WhatsApp application is not updated. And if that image, I'm sending to you that image you click, so remote perspective, a hacker can able to take access of your WhatsApp. And you better exactly in our mobile, even though in locked folder, what kind of images, contents and chats they are keeping. As you listen. So nowadays when talking about the privacy and all that, about this kind of spyware, उससे ज़्यादा बड़ी चीजें हमारे पास क्या है जो एप्लीकेशन को सॉल्व करते मोबाइल फोन में डिवाइसेस में. Now we are seeing that many companies those claim that they are super power into cyber security. They invest a hell amount of money to secure themselves. ये तो कुछ ही ऐसे काफी कंपनी ऐसे काफी एंटिटीज हैं जो स्कैम हो चुके हैं साइबर में. ये तो बहुत बड़े कम रखे हुए. आपने सुना होगा पिज्जा डोमिनोज का सुना कि डोमिनोज को डेटा ब्रीच हुआ. ऐसे काफी डेटा ब्रीच होते रहते हैं. मेरा पॉइंट ये है कि हम जब यूपीआई करते हैं, हम जब भी मॉल जाते हैं, हम जब भी ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, हम जब कभी भी कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम इंफॉर्मेशन देते हैं. डू यू थिंक दैट द इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड इज इट सेफ? वी थिंक दैट द वेबसाइट इज एचटीटीपीएस पैरामीटर, so HTTP is safe, right? It is like the data we are sending from client to server place. That assures that the data is in encrypted manner. But if I am saying that कि जो बाहर जो चौकीदार है उसको अगर पुलिस का टेस्ट करा दूँ या उसको मैं आर्मी का टेस्ट करा दूँ तो क्या वो आर्मी वाला हो जाएगा? वो क्या पुलिस वाला हो सकता है? इस तरह का लेयर एसएसएल. तो लेजिटिमेसी आप समझिए कि रियल वेबसाइट कौन सी है, फेक वेबसाइट कौन सी है. Amazon.com है, Amazon1.com है, दो HTTPS है. आप सोचिए कि Amazon.com is the real one, Amazon is the fake one. Now, you see, IIT Madras hit by ransomware. Sorry, mom and dad, 22 years old, dies by suicide in Bangalore. Bangalore college student dies by suicide after she lost money in cyber fraud. IIT Bombay student duped over 7 lakh by scammers in digital arrest. College, these are some news. आप खुद करोगे Google अपने subject में, you get to see what kind of news. This is the reality. You can't hide ourselves from a reality that we don't know कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ हुआ नहीं. So the point here is that how that IIT Bombay student duped over 7 lakh by scammers. So tell me what exactly is digital arrest? What about digital arrest? हम देखते हैं आजकल यूट्यूब खोलते हैं तो आजकल हर एक्सपर्ट्स आके बता रहे हैं कि ये डीप फेकिंग होता है, डार्क वेब होता है, हैकर ऐसे काम करते हैं. पुलिस ने मुझे पुलिस करके लूटा, फिर मैंने पुलिस को चश्मा लगा दिया, फिर मैंने पुलिस को लूट लिया. कानपुर में एक व्यक्ति ने करके चोर को लूट लिया, उसको भी अवार्ड मिला डीजीपी से. ऐसे लो. The point is that the trending cybercrime perspective we are talking about digital arrest, cyber slavery, investment based online gambling, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे साइबर क्राइम के थ्रेट्स हैं जो काफी ट्रेंडिंग है, काफी ट्रेंडिंग है. और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ब्लूटिक की बात कीजिए जो सेकंड लास्ट में ब्लूटिक और वेरिफिकेशन. अगर कोई बोलता है कि मैंने आईटी का फैशन देखा यार, आप अच्छा डांस करते हो, आपका एकेडमी देखा, यू डिड वेरी वेल, आपका रिसर्च देखा, जनरल देखा, इट वाज अमेजिंग. सो आपने इस टॉपिक में क्या किया? ओके, डोंट माइंड, मैं आपको अपने इंस्टा स्टैटस से मैसेज करता हूँ और दे आर शेयरिंग सम सॉर्ट ऑफ लिंक. और मेरी जैसे है कि आपका प्रोफाइल ब्लूटिक में है तो आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आपको ब्लूटिक दे सकते हैं, आपको कुछ वेरीफाई करना पड़ेगा. और मे बी प्रोफाइल दोज हु आर इन ब्लूटिक एंड दे आर सेइंग दैट कि अभी कॉन्सर्ट की आईपीएल के टिकट्स मैं सस्ते दिलवा सकता हूँ. और यूजुअली दे आर पोस्टिंग यू नो ऑन देयर इंस्टाग्राम पेजेस ऑन स्टोरीज दैट कि थैंक यू पूजा, थैंक यू दीपक, मुझे टिकट्स मिल गए. अच्छा, मतलब shouldn't believe like that. And trust me that in India itself, we can build lots amount of money in this particular because of this cyber fraud. So my point is that you heard about these kind of trending things that can be worked out. कुछ मेरे पेजेस आ रखे हैं, that is scammers pages. ये वो images हैं जहाँ पे पुलिस बंद करके criminals फोन करते हैं. And sometimes these criminals they pretend themselves as a superstar, police star. I like that. Why? Because they are using fake number. They are using fake detail, they are using fake internet, and they are thinking that they are safe. और एक सिचुएशन है
कि डिजिटल अरेस्ट में ऐसे काफी गैंग पकड़े गए हैं, काफी ट्रेडर्स पकड़े गए हैं. ट्रेडर्स कैसे हैं? There is also the shocking perspective. Now coming back to some case studies, then we get to exactly. The first case study which I would like to highlight, that is called phishing matters. You can see this first image. That is a government email. Phishing. Everyone knows exactly what is phishing. So these are the matter how things are coming. The URL is completely different. It's called email.gauze.in.online. So nowadays, cybercrime is trying to get different websites. Those who come say differently. Yes or no? Second is like using logo of Tata Motors, State Bank of India, and everything. Then they're saying that they are legit. It's like impersonation of using anything. IIT का लोगो यूज करके मैंने क्वालिटी डिस्काउंट की ऐसी जॉब है, सब प्रोग्राम तो लोग यूज ट्रस्ट कर लेंगे. Sometimes we have to be very clear exactly what is what. The third one called this SMS. ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है थर्ड वाला. आपके मोबाइल में मैसेज आता है कि आपका पेटीएम हो गया, आपकी टिकट बुक हो गई, या फिर कोई मैसेज की केवाईसी अपडेट नहीं है. इन दैट केस यू कैन सी दी प्लेटफॉर्म दे हैव यूज्ड फॉर NGLog टू सेट अप देयर मैलिशियस कंटेंट. माय पॉइंट इज दैट dear customer, your SBI bank account has been suspended. KYC, please complete your KYC tender. Click on this link. And that message came from number. You think that we ऐसे कोई मैसेज नंबर से आते हैं? So that is the point, like when something comes for your subject, जब Zomato से ऑर्डर किया था, आपका रिफंड 100 रुपीज का वो ये, आप तो Zomato हो या स्विगी हो या फिर वेबसाइट हो या कोई भी नैरेटिव आप पे डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट कौन से हैं. ये अभी रिसेंट केस है, गुजरात साइबर सेल पकड़े हैं ईमेल फ्रॉडस्टर्स को चेन्नई से. आप ये समझिए कि मैंने एक लाइन रिपीट कर रहा हूं, द एज ग्रुप फॉर एनी क्राइम फ्रॉडस्टर्स आर 20 to 35. इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा के बाद लोग बिजी हो जाते हैं काम में, जिंदगी में, उनका समय नहीं और चीज करने के बाद. मेजरली दीज आर यूजिंग. सो द पॉइंट इज दैट दे डोंट हैव नॉलेज, राइट? दे यूज VPNs, दे यूज YouTube का वीडियो देख करके दे थिंक दैट हम पकड़े नहीं जा सकते. इन्होंने फेक ईमेल बनाया हेल्पलाइन -cybercid gujarat-g-o-v.in. Am I clear? And the real website is real email is called helpline cybercid gujarat.gov.in. Gov की हाइफन लगा, gov में उन्होंने क्या लगा दिया? सिंपल एक्टिव विच इज बीइंग यूज्ड. तो जो gujarat-g-o-v.in ये डोमेन कहलाता है. ये डोमेन GoDaddy पे होस्टेड है. GoDaddy का डेटा मिला, नंबर मिला, नंबर से एक नंबर हम पता नहीं कहां यूज करते हैं, उबर से लेके, स्विगी से लेके, थाने से लेके, बुलाने से लेके हर जगह यूज करते रहते हैं. सो दैट इज द पॉइंट व्हिच इज देयर. एंड सिमिलरली द नेम लिंक प्रेमराज एंड प्रेमराज राजा पंडित फ्रॉम चेन्नई. सो माय पॉइंट इज दैट डिजिटल फोरेंसिक प्ले an important role to understand exactly what is what. Now the question comes, कैसे करते हैं, कहां से करते हैं? So now again you understand that we are using some sort of phishing campaigns. You can say like GoFish, or the trending campaigns like you can see 16 shot Murex, Vodka, Evan Jinx, Jetfisher, Bulletproof Kits, Shadowfisher, Black Eye. ये वो exploitation काफी पे मिलते हैं जिसपे अगर आप मेल करते हैं तो उनका फिशिंग पेज होता है वो डिलीट जल्दी नहीं होता है. जैसे पहला वाला है 16 shot. 16 shot एक ऐसा फ्रेमवर्क है, ऐसा मैलिशियस फ्रेमवर्क है जो फिशिंग क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, जो एप्पल, अमेजॉन, पेपल, फेसबुक जैसी चीजों का फेक पेज बनाता है. आपने कभी देखा है बोलते हैं नेटफ्लिक्स का अकाउंट एक्सपायर हो चुका है या फिर नेटफ्लिक्स में सस्पिशियस एक्टिविटी पाई गई है तो आप इसको क्लिक कीजिए, आपकी ईमेल आती रहेगी. ऐसी चीजें आती है जहां पे लोग फंस जाते हैं. दूसरा है यूएसबी अटैक्स. आपको लगता है यूएसबी सेफ, बिकॉज सम टाइम रबर डकी जैसे प्लेटफॉर्म या फिर ऐसे different things are there, gadgets are there. When you connect, it's like auto software, जो auto software रन होते हैं, ऐसे स्क्रिप्ट्स होती हैं जो बेसिकली ऑटो स्क्रिप्ट रन होती है, ऑटो रन होती हैं, और आपका कंप्यूटर डेटा लेने की कोशिश कर सकता है अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से, आपके डिवाइस से. एंड समटाइम्स यू यूज द फोन टू कनेक्ट चार्ज. अभी आपको सिर्फ चार्जिंग करना है, यूपीपी या फोटो मोड कौन सा मोड सेट करना है, तो समटाइम्स दैट कैन बी आल्सो मिसयूज्ड फॉर द क्राइम पर्सपेक्टिव व्हिच इज साइबरक्राइम. Impersonation is very clear. अभी आपके घर में बोलेगा कि बच्चे तुम्हारे पापा ने कुछ पेमेंट देने के लिए कहा था, तो पापा का यूपीआई नहीं चल रहा तो मैं आपको कुछ पैसे भेज रहा हूँ, पहले मैं इनको भेजूंगा फिर आप चेक कर लीजिएगा. आप समझिए, हमें पता है कि पापा का दोस्त नहीं है, बोलेगा तो पापा से बात करेंगे, सारी चीजें. द पॉइंट इज दैट
Criminals always tends to attack. They will run with you, play with your emotions. Greed, lalach, love, lust, ऐसी चीजें, fear, इस तरह चीज क्रिएट करके लोग लूटते हैं. Simply what happens, people are getting trapped. Now see Google. This is called homographic attack. Idea. आप देखिए Google. ये सारे जो लिख रहे हैं, it's look like. तो पहला जो दूसरा है, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो आप इसको फील कर पा रहे हो कि अच्छा ये गूगल है, ये जीरो है, ओके ये ओ है. बट इन अ नॉर्मल सिचुएशन सपोज यू मेक अ फेसबुक पेज, वन इज फेसबुक प्रॉपर, वन इज पेज .0k. दैट कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. एंड व्हेन यू सी अबाउट दिस अटैक, you can see the attack is like exactly what Amazon.com. But when you see the cyber Hepisha, because the PPT predicted by Hepisha only, so I'm just using the same cyber Hepisha.com, cyber दोनों सेम है. लेकिन ऐसे प्रॉपर्ली सेम है, आप पहचान नहीं पाएंगे दोनों में डिफरेंस क्या है. बट जो ई है इसमें ये सैटेलाइट ई है, मतलब सिर्फ दिखने भी लगा है. क्लिक दिस थिंग इट गोज टू www.xm-cyberhepisha जहाँ पे ई है ही नहीं बीच में, जो ब्लू वाला है, मतलब कि हाइपर लिंक है. Did you got a point? These are the tricks generally which is being used by things of only phishing में हम URL चेक करेंगे प्रॉपर्ली, हमें लगता है कि सेफ है. नो. पावर सीयर्स ब्राउजर पे लोग पावर शेयर करते हैं. अगर मान लो ब्राउजर आउटडेटेड है, कंप्यूटर कंप्रोमाइज है, ब्राउजर्स को डेटा लेना चाहिए, अपने जो सेफ पासवर्ड है सब चोरी कर लेना है. एंड देन दे लीव द इन्फॉर्मेशन ऑन डार्क वेब. आपको पता है लाइफ लॉक, बिटवाटर, लास्ट पास, वन पासवर्ड, ये जो पासवर्ड सेव करते हैं ब्राउजर से, वो इज लाइक पावर मैनेजर. So they are getting hacked like 25 million last pass is potentially impacted. That is also example where this kind of things have been hacked. इसके बाद फिशिंग ईमेल, ये जो बता रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव साइबर क्राइम, ये पूरे लिंक है इंटरनेट. कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने पासवर्ड सेव किया था, वो पासवर्ड मिसयूज करके आपका डेटा ले लिया, फिर फाइनली बोलते हैं हेलो आप दीपक बोल रहे हैं, ओके आप दिल्ली से हैं, तो आपने कार का लोन आपने सबमिट नहीं किया, आपको कार क्रेडिट कहाँ से मिला उसको. सो देयर मैनी वेज वेयर थिंग्स आर देयर. लेकिन कार तो नहीं है. और अक्सर ऐसी कॉल्स आती है, कॉल सेंटर से लोन लेंगे सर, लोन लेंगे क्या. तो दीज आर व्हाट इज अ कैंपेन टू नो एग्जैक्टली यू आर इंटरेस्टेड और नॉट, यू आर द पर्सन और नॉट, यू आर दीपक और नॉट, योर नंबर इज रनिंग और नॉट. जब कोई कॉल आती है वो काट देते हैं, मतलब नंबर चल रहा है. उनका पहला वेरिफिकेशन ये होता है कि जैसे नीड टू एग्जैक्टली नंबर एक्टिव है कि नहीं. नंबर सेव किया, अगर डीपी भी करेंगे मतलब सर व्हाट्सएप चल रहा है, जब सेटिंग में उसने डिसेबल कर रखा हो तो सम टाइम डबल टिक आ रहा है. दैट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ पैरामीटर टू वेरीफाई दैट नंबर इज वर्किंग और नॉट. फिशिंग ईमेल, ऐसे मेल्स आती हैं, मेल में ग्रामर एरर्स होते हैं, फेक ईमेल्स होता है, फेक अटैचमेंट, एंड अटैचमेंट इज लाइक दिस. इट सेज कि आपके कंप्यूटर का वायरस खत्म हो गया, आपके सिस्टम ये हो गया, मोबाइल पे ये हो गया. And normally we can click these things and this can work. Investment frauds are top. I'm telling you, investment crypto के लोगों ने लाखों नहीं करोड़ों रुपए गंवाए हैं. और कुछ वैसे लोग जिन्हें पैसे में फर्क ही नहीं, तो ठीक है किसी ने कॉल किया, that's for extortion calls. Normally they call, they hack the videos and they say you are blackmailer दूंगी, वो गलत मैंने बताते नहीं है और डिटेल की मनी टू. जब जानते हैं पैसे नहीं दे पाएंगे तो लास्ट में फाइनली ब्लॉक मारते हैं. उसका तो काम हो चुका है एक्चुअली. तो दैट इज टैक्टिक्स, एंड ये टैक्टिक्स अक्सर 35-40 एज से बड़े वालों को यूज करते हैं, क्योंकि उनकी एज होती है, उनके पैसे भी होते हैं और सिर्फ वो पैसे दे देते हैं. और हमारे ग्रुप में क्या है, हमने यहाँ से उधार लिया, उससे उधार लिया, उससे पेटीएम किया, उससे ये किया, ये किया, और ये सर्कल चलता रहता है. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, यू कैन सी द फेक एडवर्टाइजमेंट स्टॉक्स. तो हम अभी बात कर रहे हैं. I know everyone using Android, iPhone. Android is much vulnerable as compared to the iPhone. Android is mostly use APK files and all. Use certainly gets fake applications for timing as well. That is also vulnerable. So यहाँ पे ads आ रही है. ये ad जो पहला ad दिखा रहा है कि रचना रनाटे WhatsApp ग्रुप में शामिल हो और 1 से 3 stocks पे ऐसा करके at the bottom you can see that learn more than the when you click that link it goes to here in WhatsApp. In Telegram, they join you and simply they will start telling you you will earn money like that. And trust me, ऐसे इन्वेस्टमेंट बेस्ड लास्ट फ्रॉड्स काफी ज्यादा हो रखे हैं और ऐसे एड्स के नाम से कभी फाइनेंस मिनिस्टर, कभी सुंदर पिचाई, कभी कुछ, ये पूरे फेक एड्स हैं. यानी कुछ एड्स पे ना शो किए, ऐसे काफी एड्स हैं जो बेसिकली वर्कआउट होती हैं.
पासवर्ड की बात की जाए, पासवर्ड इज लाइक, पासवर्ड कितने खतरनाक पासवर्ड होता है। पासवर्ड खुद सोचिए कैसे होंगे। हमने ऑडिट किया था, हमने ऑडिट कैसे पासवर्ड से एक पासवर्ड था आई लव यू, जय श्री राम 1 2 3 @1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, these are the common password। ज्यादा वो ऐड नहीं लगा दो और कुछ हो तो नाम क्या है @1 2 3, यही होता है ना। ये गाड़ी का नंबर है तो रियल नंबर है तो गर्लफ्रेंड का नंबर है बॉयफ्रेंड का नंबर। पॉइंट इज दैट पासवर्ड तुम कुछ भी रखो डजंट मैटर, बट the thing which I said to you that you keep changing the password। Second, try to use two-factor authentication at least। अगर हैक भी हो गया तो at least आपको मालूम चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। चैट जीपीटी, गूगल जीपीटी, डार्क जीपीटी, दुनिया भर की जीपीटी एआई मॉडल से लोग मेल करते हैं, ट्राइन करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। मतलब आज की जनरेशन में जो मिसयूज ऑफ जनरेटिव एआई वो भी ज्यादा हो रहा है। तो आप कभी ये सोचिए कि इसके ईमेल में या मैसेज में एरर होगा। वो मैसेज पहले हम करते थे कि हाय मैं समीर बोल रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, फिर हम लिखते थे कि रैपर में हाय मैंने बिल लगा दिया, तुमने पास्टर से लगा। तो दैट वाज द ओल्ड ट्रेंड। आप चैट जीपीटी में ऐसी प्रॉब्लम लगी आएगी ना कि आप बोले ओ मैं मतलब क्या है, मतलब ऐसे नहीं होता, ऐसी भी प्रैक्टिस होती है। सो माय पॉइंट इज दैट द मेल्स, द क्रैक सॉफ्टवेयर, द नैरेटिव, these are cyber threats, and my friends, if you understand these cyber threats then at least you are aware। कुछ नया लगा तो that is the pointers, crack softwares, torrent को हमने दबा के यूज किया। पर अगर हम इसे अपने रियल मशीन में यूज करते हैं, मान लो हमारा रियल डेटा है, हम अगर टेस्टिंग एनवायरनमेंट में करते हैं, VM पे करते हैं, that is fine, but at least if we use it in this platform, crack modded application, the bottom one called Office Suite। तो बॉटम में जो ये प्रीमियम मॉड एप्लीकेशन है, फिर यूज दी मॉड एप्लीकेशन फॉर क्रैक पर्पस पबजी। परसों पबजी का डेटा बेचते हुए कंपनी पे रेड पड़ी, BGMI गेम जो है डेवलपर ऑफ सेलिंग द डेटा। तो ऐसे काफी इंस्टेंस है जो इंडिया में गवर्नमेंट वर्कआउट कर रही है। एप्लीकेशन कॉल बब स्वीट भी यूज फॉर VAPT फॉर वेबसाइट फजिंग, वेबसाइट वल्नरेबिलिटीज के लिए। हमने टॉरेंट पे या फिर हमने टेलीग्राम पे हमने ऐसे एप्लीकेशन पाई, वी यूज using this is not a problem। The problem is what that sometimes that application have malicious agent and that may act as a backdoor, and if the application we are using in our sandbox environment or VM environment or testing environment, then that is fine, but still we are using the real problem, then that application may act as a payload for the hacker and they can able to take the advantage and the connection to establish connection on your machine। फिर मोना क्रैक वर्जन डाउनलोड करें। हम देखते हैं YouTube में आपको काफी थंबनेल्स आती हैं, मतलब कि कोई मूवी है रिलीज नहीं हुई, दिखा दे वो इसको मूवी देखो, क्लिक करो तो पता चल रहा है कि कोई साउथ की पुरानी मूवी चल रही है। तो समटाइम व्हाट दैट्स कॉल्ड क्लिक चैटिंग, समथिंग लाइक दैट। तो थिंग्स आर देयर, credentials are there, releases are there, data is there, actors are there, criminals they trying to collect, they trying to sell the data। अब देखिए यहाँ पे जो डेटा बेसिकली India SDFC bank details, India SDFC bank details, all the data is somewhere there। The point is that we do VAPT, that is good, company is safe, we have firewalls, everything is safe, but the problem is that maybe the computer is vulnerable where, or the person is vulnerable where we are giving the money, boss मुझे 1000 रुपए से एक डेटा दे दे, एक व्यक्ति का, इससे मुझे कुछ 100 रुपए दे जितना अकाउंट, फिर हर महीने 1 लाख 2 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं। प्रीमियम कस्टमर्स के डेटा दे दो, डेटा दे देते हैं। अब होता है बेसिकली OTP का, क्योंकि सारा डेटा हमारा जा रहा है, सारा डेटा हमारा जा रहा है। मैं ब्राउजर पे अगर यूज करता हूँ प्राइवेट मोड और इनकॉग्निटो मोड और सोचता हूँ सेफ हो, तो आप सेफ अपने लिए ही है। गवर्नमेंट चाहे तो या ISP चाहे तो पूरा चिकन डाल सकती है क्या क्या चीजें ब्राउज हुई। VPN वो भी एक नेटवर्क है that can be traced out basically। The point and very important element about the last slide that is called mobile threats। So the mobile threats are very tough। आजकल चोर घर के अंदर नहीं आते हैं, आजकल वो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्शन चैलेंज करते हैं आपके सिस्टम पे अपने मोबाइल के माध्यम से। और आपको अगर कोड पे सुनना है, आपको अगर टिकट्स डाउनलोड करनी है, आपको अगर IPL सट्टा लगाना है, तो एवरीथिंग यू नीड इंटरनेट और डिवाइस। जैसा नो आपको कंटेंट डाउनलोड करना है, आपको रिसर्च पेपर लिखना है, आपको डायग्राम चेक करना है, हर चीज के लिए these are the applications। You never exactly applications are true or fake। So 17 arrested in instant mobile loan app। Instant loan now extortion later Delhi police burst app based scams with Chinese link। 27-year-old entrepreneur from Gurgaon cheated rupees
classes scam, women lost 11 lakh, men had 16 lakh in fake stock trading app, Chinese Flana Dinka app. So every day is app. And you can go right now, you can just go to settings, choose कि मुझे लास्ट के एक वीक का सिर्फ न्यूज दो जो ऐप के ऊपर बेस्ड हो, एंड यू विल बी शॉक्ड एग्जैक्टली कि नाउअडेज फ्रॉम द ऐप डीके बॉस इज हियर. सो नाउ हियर अबाउट डीके बॉस. ये भी एक गैंग है बेसिकली जिसको हमने बस्ट किया था, एंड दैट गैंग वाज अमेजिंग बिकॉज हम जितना आईआईटी नहीं सीख पा रहे वो बंदा सिर्फ यूट्यूब में जाकर के वीडियो में स्टार्ट करके यूट्यूब में जाकर सीख रहा है. एंड एज ग्रुप इज व्हाट एग्जैक्टली द एज ग्रुप इज very less. They are the dropouts. They're using AI tools, YouTube tutorials, and they have defrauded around 3,000 mobile users and nearly 12 crores in 500 cases. Third line, ChatGPT they have used. They have identified the APK packages, and after that they learn something from YouTube. After that they share this information to the platform. Now the question is that we talk about the APK file application and should be there to the people. And now what we do, once we done with our things, we think about startups and we think about a company called Google and we think कि अच्छा package मिलेगा and we can try to earn money in years. And they have a gang and that is called organized gang. तो शॉर्टकट से पैसे कभी नहीं मिलता है. मैं दिखाता हूँ उन लोगों को जिन्होंने ये चीजें की हैं और जो गैंग बस्ट होते हैं. कभी ऐसा देखा है कि मैसेज आता है व्हाट्सएप पे and they say that install any application APK करें, शादी का कार्ड बिजली का बिल नहीं हुआ है, बैंक अपडेट कीजिए केवाईसी, एनीथिंग. और maybe you can see that the application is banned by the government of India, but still try to download APK, third party. So these APK actually they have the permission where they try to intercept your SMS. So the question is that आपका सारा डेटा, आपका बैंकिंग डिटेल्स ऑलरेडी हैकर के पास है, कहीं से आधार कार्ड यूपीआई जो भी है, एंड ऑफ द डे व्हाट यू नीड OTP. So what do you do? When you go to any website, for example, you want to use Blinkit, simple. So Blinkit has an application. Point number 2, there is OTP terms. It asks कि आप ब्राउजर से जब आता है SMS रीड करने के लिए, बोलता है कि ब्राउजर को परमिशन दे दीजिए SMS रीड करने का, तो ऑटो OTP फिल कर देगी. होता नहीं होता है. Sometimes you think assume that if that application is asking OTP permission, SMS permission, it's not only reading the OTP of Blinkit. It may read OTP of other application. And at the same time, if you use an application like updating KYC or any modern application, and you thought कि वो application हमें कुछ फायदा दे सकती है AI के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए, ऑडियो कॉल करने के लिए, डीपफेक की आजकल डीपफेक का जमाना चल रहा है ना, फोटो डालो, I should get the real things. तो ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एविएटर, आज तक न्यूज, सेलिब्रिटीज ये सबको यूज करके कहीं ना कहीं पे हमारा डेटा चल रहा है. आई होप यू हर्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर जेएफ फॉर दिस वीडियो. ये सुनो, ऐसे काफी चीजें फिर यहाँ पे आते हैं कि आप भी ऐसा करना चाहते हो तो आप अपनी वीडियो डालिए, अपने दोस्त की वीडियो, दोस्त की फोटो डालिए, हम दोनों को दिखाना है. भाई चल रहा है कि दो कपल फिर वो लगा है. ऐसी काफी चीजें हैं तो वो है जिसको डिस्कस कर सकते हैं. बट व्हाट अबाउट द लास्ट वन, टू रिमूव द क्लोथ्स. Sometimes these kind of erase now applications are there in deepfake and they're posted on a random website. It is just like a cg.online. ये applications हफ्ते 2 हफ्ते चलती है, उसके बाद application बंद बैन हो जाती है और जब लोग रिपोर्ट करते हैं तक में इन्वेस्टिगेशन करते हैं तक में चीजें खत्म. तो I just explained exactly what are the ways, what are the root cause, what are the attack vector where your data has been gone. Anything इधर मैंने तो सिर्फ इमेज डाउनलोड की थी सिर्फ उसको इरेज करने के लिए, फिर मैंने इंस्टॉल कर दी थी. उससे क्या हो गया फिर? आई एम टेलिंग यू गाइस, द मोमेंट आई इंस्टॉल द एप्लीकेशन आपका नेट हमेशा ऑन रहता है. फिर नोट एग्जैक्टली मेरा क्या पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, क्या पैकेज जा रहा है, और आपके सिस्टम पे कॉन्टैक्ट की फाइल होती है, डेली फाइल होती है, हार्डली 1 MB टू MB की होती है, चाहे कितनी भी आपके कॉन्टैक्ट्स हो. It hardly take 2 to 10 seconds to upload the contact, and after that when you uninstall the application, then you will say, boss, तो प्रीति की फोटो भेजो, मैं दीपू की फोटो भेजो, मैं तेरे बुआ को फूफा को फोटो भेजो. They speak such languages, slang languages, and sometimes they morph a photo and they say that this is the boy, one like that message, and they are circulating to the platform. And nowadays it's not fraud. In this situation, people commit suicide.
So when it comes to suicide or किसी लाइफ थ्रेटनिंग में चीजें हैं तो फिर it's not a normal situation. So understand the reality and understand the forensics, cyber, how things are working, how the crimes are working, and prevention perspective. The portals are there, Chakshu portal, the websites are there, like Sanchar Sati is a very brilliant initiative by the government of India. अभी की सिचुएशन में जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आधार चेक कर सकते हैं कि आपके आधार मल्टीपल्स हैं कि नहीं, आप लोग फोन में जाता है रिपोर्ट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं. It's not like to go to police station. Everything you have click करना है बस ये. The website called जहाँ से मैं आया हूँ, that is called the website called cybercrime.gov.in. cybercrime.gov.in. cybercrime.gov.in एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का पोर्टल है. आपको बता दूं लगभग 6 से 7 हजार कंप्लेंट पैन इंडिया में रिपोर्ट होती है डेली. दूसरा, हर कंप्लेंट जरूरी नहीं सॉल्व हो सके. तीसरा, कंप्लेंट करने के टाइम और इंसिडेंट होने के टाइम में गैप होने के कारण जो पैसा होता है हैकर विड्रॉ कर लेता है. There's no need to report sometimes. आपने पहले रिपोर्ट भी कर दिया तो आपका टाइम होता नहीं ताकि इसको क्रॉस कर सके, चेक कर सके. So sometimes it is very important to know what is the situation. So these are the platform I would request to all of you kindly. This is government initiative, and similarly CSAI is also providing the awareness for the pan India government department, private department, institutions, academies as well, where they are providing capacity training as per the requirement. अब जो capacity training आपको चाहिए, जो नहीं कि गवर्नमेंट में भी उनको वो चाहिए, क्योंकि तो सिंपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं. Yes or no? So similarly, depending on the area to area, things are working. And now, Cyber Ghost is can help you to आप हो या फिर फैमिली मेंबर्स हो. अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स की व्हाट्सएप पे भी हर प्लेटफॉर्म पे भी ये बेसिकली गवर्नमेंट का ऑफिशियल हैंडल है जो ये बताता है कि साइबर क्राइम के देश में नया ट्रेंड क्या चल रहा है. एंड यू कैन एबल टू फॉलो, यू कैन एबल टू अपडेट योरसेल्फ. मान लीजिए कि आपके मॉम है, डैड है, डैड है, उनको नहीं मालूम कि नया एपीके क्या है और नहीं पता है कि हम कुछ एपीके कुछ कोई आपको आमंत्रण कार्ड आपको उसको इंस्टॉल नहीं करना है कि नहीं. और उतना समझ गए तो मेरे ख्याल से काफी मुझे समझने के लिए कि साइबर क्राइम क्या है. सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड. एंड एक लास्ट स्लाइड और भी है जिसमें दिखाना चाहूंगा कि एग्जैक्टली वो जो क्रिमिनल्स हैं, जो बस्ट होते हैं, गैंग होते हैं, वो कैसे दिखते कैसे हैं, देखना चाहेंगे. ओके, सो दीज आर द गैंग्स, दे आर द सुपर हीरोज, दे आर द अवेंजर्स, नो डाउट दे आर द पीपल हु एक्चुअली. So some people, some fraudsters are convicted as the fraudsters, and they are those who are saying on WhatsApp or in the platform. In India, cheating in the name of customer care is from Bharatpur, Alwar, Mewat, Rajasthan, Haryana, Noida, Delhi. जब मैं इन स्टेट का नाम लूँ तो ये समझना कि ये यहाँ के लोग ही ऐसा करते हैं. पहला पॉइंट, सबसे पहला मिथ है, क्योंकि पैसे के लिए आदमी चेन्नई से ऊपर जा रहा है. इंडिया से लोग म्यांमार, कंबोडिया जा रहे हैं. हमने लगभग 550 लोगों को म्यांमार से, कंबोडिया से इंडिया लेकर के आए. वो लोग आए से एग्जाम लेकर के फॉरेन में जॉब करने के बहाने जाते थे और वहाँ पे 2 लाख 3 लाख रुपए कमाते थे. और वो लोग वहीं से गुजरात फोन करके बोलते थे कि सोचिए कैसे हो, आपको विदेश आना है, आपने क्या पढ़ाई की है, यार मेरी तो इंग्लिश पैटर्न है. कोई बात नहीं, तुमको बस गुजराती में बात करनी है, तुमको हिंदी बात करनी है, तुमको तेलुगु में बात करनी है. सो इफ आई एम तेलुगु पर्सन टॉकिंग टू यू तेलुगु गाइस फॉर एग्जांपल, एंड इफ आई एम अ गुजराती पर्सन टॉकिंग टू यू, so if suppose you put into Telugu, you trust the Telugu people. हिंदी ऐसा जल्दी से रीजन का कंसेप्ट हो जाता है लैंग्वेज को लेकर. सो वो लोग उसी भाषा में बात करते थे, उनको ल्यूट करते थे, उनको लूटते थे एंड उनको टारगेट दिए जाते थे. टारगेट के बाद टारगेट कंप्लीट नहीं होता था, उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था. मतलब इट इज वेरी डेंजरस. यू कैन रीड अबाउट पिग बुचरिंग. पहले मतलब लोगों को इतना खिला दो, इतना वो कर दो, बाद फिर सब निकालो लाइक दैट. दैट इज सिचुएशन व्हिच इज देयर. दीस आर द कॉल सेंटर फ्रॉड्स. ये बंदे पकड़ गए, ये जितने भी हैं हरे लाल नीले पीले बाल वाले, साथ साथ पुलिस के जितने भी पीछे खड़े हैं एक्सपर्ट्स, जितने भी फ्रेमवर्क्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी हैं ऐसे, जिन्होंने जिनको पता नहीं है. अब ये बताओ कि कोई फेक वेबसाइट बनाने की ट्रेनिंग आपने डंप कर लिया पूरा वेब पेज, उसको आपने चैटजीपीटी से या किसी फ्रेमवर्क से स्टडी करके कुछ और राउंड करके आपने फेक, आपने सिर्फ इतना ही काम किया, आपने इस टेक्नोलॉजी का यूज किया, अच्छे काम किए, आपको पेमेंट मिल गई. उसके बाद इस प्लेटफॉर्म पे जो क्राइम हुआ तो पुलिस ने ट्रैक किया,
फिर मुझे पूछो भैया तुम किससे बनाया, क्यों बनाया, तो बंदा निकला कि भैया आपने बनाया, आपने बनाया। अब बोलिए मुझे क्या पता, मैंने जिसे पेमेंट किया मैंने बना दी। सो सब में भागीदारी होना भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो साइबर क्राइम में ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह के लोग पकड़े जाते हैं, और ऐसे लोग कभी कभी नेशनल सिक्योरिटी में भी इनके हाथ रहते हैं। एक बार FIR हुई तो जिंदगी भर के लिए सेवा समाप्त। अब स्टार्टअप खोलिए, कोई जॉब कीजिए, पासवर्ड बनवाइए, कोई भी बिल्डिंग में जाइए, कहीं भी जाइए, हर जगह वेरिफिकेशन आजकल हो चुका है, पुलिस वेरिफिकेशन, और बड़ी प्रॉब्लम होती है चीजों को लेकर। PhD in HRM, 2 BTech and 2 others from arrested from cyber। हैंडसम से लेके मॉडल से लेकर हर तरह के लोग कहीं शामिल, चाहे वो CID हो चाहे साइबर क्राइम हो। So these are the syndicate which is there and they are somehow linked to each other. Anyways, so list काफी लंबी है। पुलिस बस्टर गैंग सिम का हैदराबाद पुलिस बस्टर रैकेट फ्रॉम गुजरात, 36 people arrested। Telangana cops nabbed 27 culprits involved into this। Chennai police bust international network online financial frauds, police canisters consisting Indian, Malaysian nationals, SIM cards, fake SIM। अब फेक सिम यूज करके कॉल करते हैं, है कि नहीं? अरे एक सिम रिपोर्ट करते हो आप, पावर सुनना, आपने आपको फोन किया, आपने रिपोर्ट किया पुलिस को। अब एक नंबर पुलिस क्या करेगी, तो आपने रिपोर्ट किया, आपने रिपोर्ट किया, मैंने रिपोर्ट किया, सबने रिपोर्ट किया। तो जब ये रिपोर्ट होता है साइबर क्राइम पोर्टल में, देन यू हैव सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी, देन यू हैव मल्टीपल नंबर्स। तो मेरे वन नंबर इज फेक, यू कैन चेक अदर नंबर चारों फेक है, तो उसको इशू किसने किया है, वो डिस्ट्रीब्यूटर कौन था, एयरटेल था, किसका था, then that things work। नंबर छोड़ो, ये नंबर किस फोन पे लगा था, IMEI ट्रेस करो, उस IMEI पे और कौन सी लगी थी वो नंबर। तो we have chains and all the nodes when we connect, it's very easy to catch the gangs, and then the gangs are bust in the like this। Guwahati police bust arrested from major bank fraud, Guwahati police। Karnataka police cracked 1.28 cyber fraud, retired school teacher and BTech graduate from Assam, BTech graduate Assam, retired school teacher। तो it could be anyone, it could be anything। Bangalore police bust 854 crore investment fraud। So ये लिस्ट चलती जाएगी, न्यूज चलता जाएगा। I hope now you understand the gravity of cyber crime and cyber security, how it is important and what kind of threats are there। Yes or no? Am I clear? Yes. So the helpline number to report any cyber crime in India, that is 1930, and to report any cyber crime online, for example, you do have cybercrime.gov.in website which can help to you। आज नहीं तो कल कभी न कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है। हर तीसरा व्यक्ति साइबर क्राइम का शिकार होता रहता है, तो समझदार बच जाते हैं। और जो मुझे लगता है मेरी सब चीज है, तो बता मुझे क्या चाहिए, मुझे फोटो लीक कर तू लिंक मुझे दे देना, मैं भी देखूंगा, लाइक दैट। एक क्रिएट फियर थ्रेट, तो हमें इससे बच कर रहना। So that is all from my side, and from the CSAI perspective, I would request sir they can tell about CSAI more, what exactly they do. You tell about like other sessions in cyber security manner, like cyber security में और क्या चीजें होती हैं, hands-on practices में hacking कैसे होती है, VAPT क्या होता है, कुछ terms है वो कैसे काम करती है, यानी सारी information आपकी skills को advance कर सकती है। Thank you, जय हिंद। मैं देख रहा था कि ऐसा लगता है वन वे ट्रैफिक है, यहाँ से गोली जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। मैं एक तो सवाल लेके आया, आप में से जो बच्चा इसका सही जवाब देगा वो जब भी जॉब करने की तैयार होगा, हमारे जॉब कर रहे हैं लोग इंटरव्यू लेटर मिल जाएगा। कोई एग्जाम्पल बताओ महाभारत रामायण का जो घटा हो, जिसको आज के कॉन्टेक्ट में साइबर सिक्योरिटी से रिलेट किया जाए। जल्दी बताना पड़ेगा, दूसरा बच्चा जाएगा तो ध्यान मारा जाएगा। पहले आपने हाथ में रखिए, फिर से बोलो। उससे तो साइबर कैसे रिलेट करोगे? Like it was a lie, so he lied about it that उसका बेटा मर चुका था, like इसको आपको सुनो, क्योंकि हमारी एजुकेशन बहुत पुरानी है और हम एक लाख बॉडी में जाते रहते हैं। पहले सवाल को समझो। सवाल यह है
जिसको आज के कॉन्टेक्स्ट में साइबर सिक्योरिटी से रिलेट किया जाए। आपके कॉन्टेक्स्ट में आज के तारीख में कैसे रिलेट होता है, आपको मौका क्या है? सर, जब सीता माता वो वन में थे तो रावण वो किसी को वेश धारण करके आ गए थे, क्या बोलते हैं, ब्राह्मण के, और उनको बोला कि मेरे को भिक्षा दो। ऐसे ही आज के जो लोग हैं, जो होते तो पहले से ही वो मतलब फ्रॉड ही होते हैं, पर वो वेश ऐसा धारण कर लेते कि हमको फंसा लेते हैं कि चलो आप, वो होते तो फ्रॉड ही है, पर दिखावा ऐसा करते हैं कि नहीं हम आम इंसान हैं, आपकी तरह है, तो आप हमारे साथ कॉर्पोरेट करो, फिर हमारे को लूट लेते हैं। जैसे देखो, जवाब तो आपने भी सही था, आपने भी सही था, लेकिन जवाब दोनों को नहीं मिल रहा इस सवाल का। कारण सवाल क्या है? आपने इसको आज से कोरिलेट नहीं किया। आपके क्वेश्चन में रावण साधु के वेश में आया है, आज के वेश में हैकर वेश में आता है, पुलिस वालों के या जजेस के या हाईकोर्ट के, उसके या टीचर के। ये आज के कॉन्टेक्स्ट में है, ये पहले हो चुका है। आपके कॉन्टेक्स्ट में जो आपने कहा था उसमें उतना ज्यादा साइबर क्राइम गवर्नमेंट नहीं है, नहीं। अब इन्होंने एक तो बता दिया, मुझे मजा नहीं आया, तो एक बच्चा मुझे जॉब के लिए एक और मौका देता हूँ। वो दुखी बात है, आप लोग गुजरात से हो, IIT में पढ़ते हो, ऐसा लगता है कि सारा टाइम तो वो देखते रहते हो, फेसबुक रील्स देखते रहे, ट्विटर देखते रहे, ऐसा करते हो। चलो मैं बताता हूँ। जब सीता माता ने सोने का हिरण देखा और राम से कहा कि मुझे सोने का हिरण चाहिए, अब ये तो मैंने बता दिया, अब इसमें साइबर से क्या लिंक है आप बताओ। तो समझ से भूल हो गए जहाँ पर है सर, बताओ। Like after seeing that golden day, she thought, उन्हें लगा कि ये जो है सबसे अलग है, अगर मैं इसे अपने पास रखूंगी तो शायद मुझे बहुत कुछ मिल सकता है, मैं ये सबसे अलग होगा, मैं दिखा सकूंगी हाँ मेरे पास भी एक साथ इतनी सारी चीजें मिल गई। लेकिन वो एक ट्रैप था, वो रियलिटी नहीं थी, जो वो देख रही थी वो रियलिटी नहीं थी और उसमें वो फंस गई। देखो, आपने भी वही कह रहे किया, वो तो आपने बताया। आज से प्रोटेस्ट क्या है, सवाल इस चीज का है, लाइक हम देखते हैं कि अगर हम इस वेबसाइट पर जाएंगे तो मुझे एक दिन के अंदर इतना सारा पैसा मिल जाएगा। हाँ, ये बोर्डेड करना था। तो अगर मैं जाऊंगा उस वेबसाइट पे और मैं सिर्फ 10,000 रुपये लगाता हूँ और मुझे लाइक 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो व्हाई नॉट आई टेक दैट अपॉर्चुनिटी एंड गो इन 1 मिनट एंड टेक दैट। ये अगर आप पहले बोलते तो जॉब पकड़, अब जॉब इंटर कर दिया। वैसे आप सबको इंटर से बोलते हो, मैं कहते हैं मेरे कार्ड बाहर रखे हैं, जॉब करना मैं कहते हैं, चांस ही जॉब मिल जाएगा। इस सवाल को ठीक से करो, जो भगवान राम को सीखा देखो, राज छोड़ के आए, हम तो राम नहीं, तो राम को नहीं पता कि हिरण सोने का नहीं होता, और सीता कहते हैं मुझे सोने का हिरण चाहिए, तो तू तो सोना होगा सब घर छोड़ के आए, तो यहाँ सोने की क्या करेगी? ग्रीड, जैसे मैंने बताया वो ग्रीड आज भी आती है, पैसा लगाओ 2 लाख बन जाएगा। साइबर सिक्योरिटी इंसान के साइकोलॉजी पे चलती है, ग्रीड, लालच, घर, इससे चलती है। अब आप बताइए। जो महाभारत में वो बताना से ज्ञानी वाला होता है शकुनी का, तो किसी भी देखा जाए तो युधिष्ठिर को लगा था फेयर यूज कर रहे हैं, लेकिन पूरा गेम शकुनी का था। तो एक तरीके से अगर देखें तो बैकेंड में हैकर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो शकुनी से हैकर होगा, इससे पूरा ऐसे कुछ सबमिट करता है। उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, वो एक गेम का डिस्प्यूट है। मेरा पूछने का पर्पज हल हो गया कि आप लोगों ने जा रहे और तो हम बाद में जाएंगे लास्ट में। सर मैं ट्राई करूं? नहीं, आप तो हमारे ऊपर अपने आप बनाइए। एक सवाल उसके पे आपने कितने लोग दिमाग या स्विगी ऑर्डर करते हैं या सभी करते हैं, आपको पता है कि स्विगी आपके डेटा का क्या कर सकता है? ये डिमांड जल्दी बुरा करो क्योंकि उनका टाइम में खराब हो जाएगा।
जब आप सिविल डिपार्टमेंट ऑडिट करते हो, आप फिर करते हो एग्रीकल्चर कंडीशन, उसमें सिविल डिपार्टमेंट आपसे ये कंसर्न ले रहा है कि वो आपका डाटा, आपका यूपीआई का बैंक डिटेल्स, आपका बैंक का पासवर्ड, आपका बैंक नंबर, आपकी चॉइस कि आपको वेज खाना है कि नॉन वेज खाना है, आपका घर कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, वो सारा डाटा शेयर कर सकता है किसी के साथ। ये आपके प्रोटेक्शन दी गई और यही कारण है जो दीपक की बता रहे थे कि पासवर्ड हैक नहीं होता है, कहीं हो जाता है। बाकी बातें बातें रहेंगे लास्ट में। थैंक यू नवीन जी। सर एक सर जो गुजरात की आपने बात की इसलिए उसकी रेपुटेशन के लिए एक इंसिडेंट मैं बता देता हूँ। आज हनुमान जयंती भी है और ये हार्दिक जो यंग लड़के से है ना, ये हमारे यहाँ का काम देखते हुए आ रहा है, ज़्यादा काम दे रहे हैं। और सर को आज मैंने एक मैसेज भेजा था हनुमान जयंती का, सर also has that same humbleness and because you know we are fortunate that he is with us and he is the father of telecom, he is regarded as father of telecom and he is the छोटा सा इंट्रोडक्शन का, अगर बड़ा इंट्रोडक्शन होगा तो दिन चले जाएंगे। शॉर्टर इंट्रोडक्शन ये है कि फर्स्ट इज द फादर ऑफ टेलीकॉम, सेकंड इंट्रोडक्शन शॉर्टेस्ट इज द ओनली इंडियन पर्सन टू गेट इनवाइटेड इन द CES इवेंट for 5 ribbon cutting ceremony for the 5 consecutive times in US. So that is the sort of shortest introduction. और जो हम हनुमान जी की जो बात कर रहे थे, फिर उसमें एक इंसिडेंट है रामायण में कि when राम जी और लक्ष्मण जी जब सुग्रीव जी से मिलने जाते हैं तो उनको पहले सुग्रीव जी को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि two human beings are coming and they are looking out for सुग्रीव, so शायद उनको खतरा है तो वो हनुमान जी को भेजते हैं। तो वो डिस्गाइज हनुमान जी एक पंडित जी का डिस्गाइज लेते हैं। So that actually if you relate it, it does the work of a firewall. Firewall क्या करता है? पहले पैकेट को इंस्पेक्ट करता है whether it is regimented or not. तो वो शास्त्र करते हैं, राम जी के साथ श्लोक्स में बातचीत करते हैं और फाइनली when he is convinced that okay these two human beings are okay, only then he allows to meet with the Surya. So that is, so Hanuman ji is the best firewall we can take inspiration from. और भी बहुत सारे cases हैं, but we will cut short from this. और मैंने इसीलिए इसको मना किया था, इसको पता है ना, दुनिया के साथ है। Good afternoon, everybody. So you can see on the screen. So we have a gift for you. Register yourself for a mystery gift for a lifetime. So you have a mobile phone. You can scan the QR code and you can go ahead and take your mystery gift for a lifetime. It will be for a lifetime. You will get a great gift and so just want to talk to the people right now. Everybody will just stand and fill the form. You can check your. That is up to you. That's for you to decide if it is up or not. But you have to fill the form. जिसने बोला उसका जॉब पक्का है, ठीक है, क्योंकि यही ट्रैप है, यही ट्रैप है, ये मुझे और बंदा नहीं आएगा। So let's see. You scan that and यही ट्रैप। do it. सर आपने को बताइए बच्चों को। आपने को बताइए भाई ये चलो दिखा दो, उसके बाद दिखा दो। So एक बच्चा स्कैन कर दो कोई। you will surely get a gift for a life. अब दिखा दो, इसको दिखा दो। So can you see that? Can you check? Sadly, only one person has read it. That is Naveen. Not do that is very good. Very good. Next time जब फिजिकल अटेंड होगा, you will be the first one to have. So what is the gift for lifetime you have got with Naveen? What is the gift you have got?
question if this is a scam or not, who was that? You were. What's your name? अब वो दिखा दो इसीलिए आता है इसीलिए डाटा है मुझे So, repeat for lifetime your God is this mantra, zero trust. So this will help you everywhere, everywhere. So never trust, always verify. So I will say never trust, never trust, never trust, always verify. So it works everywhere. Like you must have seen Dr. Deepak's presentation, where he was showing that some people are using deepfake. You know deepfake? Everyone knows deepfake means आपकी शक्ल लगा के आपके फादर को फोन कर दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि हाँ मैं यहाँ फंस गया हूँ पापा मुझे ऐसे राइट. तो अगर आपको ऐसा फोन कभी आता है तो जीरो ट्रस्ट विल वर्क. नेवर ट्रस्ट. You should not trust that phone. You just disconnect it. Call your father. Verify. You are verifying, huh? You are not trusting. You are verifying whether this is the right person or not. When you call your father, you come to know the real truth, right? So this is the gift for lifetime you have got, right? Yeah. Okay. So, mastering offensive and defensive security. You know what is offensive security? Offensive and defensive? Anyone? Offensive and defensive security. You know? You know? What's your name? Arjun? Yes. So, this is, I was offensive and you were defensive, right? I was attacking and you just अपने को बचा दिया, right? और यहाँ पर अटैक भी कर सकते हैं, रोक सकते हैं, you could have get that. So, offensive is attacking and defensive who is defending himself, right? So, there are two teams over here. You can see mastering offensive or defensive security. This is the future of cybersecurity. So in offensive we attack, we have hacker to attack, and we create defensive team also to defend. ये आर्मी का एक रूल है जो कि रेड टीम और ब्लू टीम से स्टार्ट हुआ था. आर्मी क्या करती है कि आर्मी अपने ही जवानों को दो टीम में बांट दी. वो क्या करती है कि एक रेड टीम बना दिया, एक ब्लू टीम बना दी. अब रेड टीम को कहते हैं आप को भी सब कुछ आता है, आपको भी सब कुछ आता है, दोनों को सेम ट्रेनिंग दी है. अब एक अटैकिंग टीम बन जाओ और एक डिफेंसिव टीम बन जाओ. ब्लू टीम इज डिफेंसिव. नाउ वी विल सी कि अटैकिंग टीम क्या क्या सोच के अंदर घुस सकती है और डिफेंसिव टीम उनको कैसे कैसे रोक सकती है. बाय डूइंग दिस दे विल अंडरस्टैंड कि वो डिफेंड करने वाला क्या नए तरीके सोच, अटैक करने वाला क्या नए तरीके सोच सकता है अटैक करने के, और डिफेंड करने वाला उसको किस तरह से रोक सकता है, कहां वो चूक सकता है. तो दे विल गेट लेसन्स लर्न आर टेकन केयर ऑफ, और उसकी लिस्ट बनती है फिर उस पे काम किया जाता है, राइट. सो दिस इज ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव सिक्योरिटी व्हिच इज द फ्यूचर ऑफ साइबर सिक्योरिटी. So now I will know you. थोड़ा बहुत करके आपको अपने बारे में बताते हैं. So I am Dr. Naveen Dham. I have 2 decades of experience in security. I have 27,000 implementation, maintenance, security auditing, and IT service delivery by education. I am BTech in Computer Science, Master in Cyber Forensic and Information Security, Doctorate from Software Social University, and I am certified CSAI certified information system auditor. So like CA, you know, chartered accountant sign करता है report आपकी
accounts team. Like I can sign any report in information security across the globe. So वो CISA, if somebody does CISA, so he gets that authority. So that is CISA, and I am ISO 27001 lead auditor, ISO 27001 lead implementer, CSAI DSS implementer, and from DSI ISO 27001 lead auditor, 22301 implementer, ISO 9001 lead auditor, lead implementer, ITL and JC, and a year of A+ certification. I am honored with the global award. I was honored with the global award in London for my initiative in information security. So in the year 2011. So I started this company, G Info Technology Solutions Private Limited, in the year 2012. So I am ex-Wipro. After Wipro, I started this organization in the year 2012, and my first customer was. So I started this as a proprietorship firm, which was by the name of Global IS Consulting. And after that, my first customer which I got was Panasonic. Then I got Wipro. Then I got ASL, HCL, Stellar Data Company, Punj Lloyd, Apollo Medical Health Insurance, Max Healthcare, Usha International. So when Usha International came to me, they said that you should have a private limited organization. So it's better to give work to private limited organization. So that time I incorporated in the year 2017. We incorporated G Info Technology Solutions Private Limited, and after that we got a lot many more projects like CA Birla and I Group came to us. Then we got Naukri.com is also our client, and IIT TV channel, IIT Roorkee is our client, IMT Ghaziabad is our client. So likewise we got lot many clients, and in the year 2019, US Air Force Department of Defense, they sent a challenge in the market that can anybody hack us. So we said why not? So we accepted that challenge. हमने कहा कि सुपर पावर को अटैक करने का मौका मिल रहा है, छोड़ेगा कौन? Right? So we accepted that, and we attacked them very badly, and we found around 17 vulnerabilities in their environment, and that worked like a catalyst for me. And after that I opened my organization in US by the name of G Info Technology Solutions (INC) in the year 2019. After that we opened in Canada, after that Dubai, and now we are incorporated in one organization in Australia also. So in the year 2011 and 2021, we went for certain environment. So certain is a computer emergency response team. If you want to work with government, you should be empaneled with certain, and getting empaneled with certain is very, very tough job. So they take your test, they take you left, right, and they review apart in the test. There are around 5 different phases through which they take you through, and we passed that, and we got certain empaneled, and then we entered into the government sector. So if you can see, we have got a lot many government clients after that. In the lower row, even GEM portal is our client, Steel Authority of India, E-Mudra, GST portal we have done, and Ministry of Health and Family Affairs, Ministry of Law and Justice, and High Court of Chhattisgarh, and lot many. We got lot many times as well. So these are the different awards which we got. Like the most, you can see, we got most admired companies in India 2024 by Forbes. So honored with the Media International Achievers Award in May 24, iconic brand in India 2024 by Outlook Magazine, most trusted brand in India by Economic Times, received appreciation from, I told you already this, educating industry on cybersecurity challenges every week on Times Now TV channel. So you can watch me on Times Now TV channel. Every Saturday I am imparting my cybersecurity knowledge to the entire world about cybersecurity. So now even we have completed 50 episodes now. NDTV is after my life. You can see me on NDTV going forward. So and top 10 most promising cybersecurity companies in India by Security Magazine and consultant of the year 2021 Business and Magazine featured in multiple newspapers for launch of. We have launched one AI which on our website you can go and check.
this can help you answer a lot of questions. So, as your data being leaked to outer world, you know that your email could have been hacked. So, how can you check that? अच्छा जिसने अभी वो किया था रजिस्टर उसका नहीं था सरप्राइजिंगली नहीं था आई एम इवन सरप्राइज कि भाई साहब का अभी तक लीक नहीं हुआ डेटा अच्छा सो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड Hackathon. You guys can put your emails out there and you can check if you have ever been leaked in a previous data breach. So what happens is, let's say Zomato का भी breach हुआ था, Apollo Tyres का breach हुआ था, आप में से कितनों के पास Domino's है? हाँ, I believe Domino's को समझने का होगा कितना? एक बार you can go to this haveibeenpwned.com. Yeah, so you can go to that website and you can put your email address there. ये कोई वो नहीं क्राइम haveibeenpwned. आपने वो किया haveibeenpwned अपना email डाला क्या है? Oh my God. बताओ अपने आप क्या लिखा है? बताओ कितने लिखे हैं? So you can either tell me your email address here. हैं? अच्छा वो किसका था? अच्छा that था. So good. So you have not been found. And anybody else who will check? Oh wow. What about you? Good news. इसका मतलब ये है कि IIT गांधीनगर के बच्चे स्मार्ट हैं, उनकी ईमेल हैक नहीं हुई है। स्मार्टनेस है। No found found. Very good. आपका आया होगा ना? दो है कहाँ हुआ है? ग्रेट। तो इन्होंने कई बार अकाउंट बनाया दो जगह पे, लालच आ गया डाउनलोड कर लिया टाइटल्स फॉर एनी वीडियो। लेकिन एक मेरा सवाल है, मैं तो बहुत तक करता हूँ कैमरा लगा के, इसका आंसर क्या है? आप कैसे सेव करोगे कि आपकी ईमेल है एकदम? अच्छा आंसर दिए, जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, सेकंड्स के अंदर। अरे सिंपल सा आंसर है, यूज ए डुप्लीकेट आर ए फेक आर ए न्यू ईमेल आईडी। खत्म बात होगी, ठीक है ना? गलत का सही का, गलत का सही का नहीं, जो यहाँ यूज कर रहे हो, अगर आप जोमेटो को ऑर्डर कर रहे हो तो उसमें दूसरी उसको क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नवीन जी। प्रोफेसर समीर और अभिषेक, आपके सारे बच्चे स्मार्ट हैं, किसी में नहीं है, और ये पहली बार हुआ हमारे साथ, नहीं तो हर कॉलेज में हर दिन जाता है कि 100 yes 14 पेजेस। अरे नवीन जी, जो मैं तारीफ कर रहा था विड्रॉ करनी पड़ेगी, इसके तो 14 पेजेस है। कितने? 14 दोनों पॉइंट लिखा हुआ है। चलो ये तो जो मैंने तारीख को विड्रॉ करता हूँ। 14 so this is very useful website where you can go. I have come back to this one. अगर मैंने तो आज बोल दिया, किसी और ने आपके पास QR कोड दिया, तो आप कैसे पता लगाएंगे QR कोड सही है कि नहीं पता? There is one application Moving Armor, ये अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिए, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इसमें एक है स्कैन QR कोड, अगर आप देखोगे स्कैन QR कोड, कोई भी QR कोड दे तो पहले इससे स्कैन करते हैं, राइट? तो ये जब स्कैन करोगे इसमें अपने आप उसका वो आ जाएगा। QR कोड पे डालना, अब मैंने इसको
So one more thing, जैसे आप लोगों का पासवर्ड आप लोगों ने रखा हुआ है, how many people have put the same password on different accounts? Raise your hand. Very good, bhai. You are my favorite student. So now you can check one thing, that has your password ever been stolen somewhere? Because क्या होता है, hackers क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं लीक पासवर्ड की और वो ट्राई करते रहते हैं अकाउंट्स पे. And how would you do that? In the same website there is a section for passwords. Let me just show you. This is the website and you can simply go to this section which is the password section. आप अपने यहाँ पे password डालो and it will show you if your password is leaked or not. मैं दिखाता हूँ, मैंने स्कैन किया था. आई स्कैन दिस यूजिंग मूवी आर्मर. इसमें क्या आ रहा है, मॉडरेट, और इसका रेटिंग क्या आ रही है, सी ग्रेड, सी, राइट, सी रेटिंग आ रही है. अगर आज के बाद कोई आपको देगा मूवी आर्मर इंस्टॉल अपने उसमें कर लो, उसमें देयर इज लॉट मेनी अदर फीचर्स ऑल्सो विच कैन डिफेंड यू अगेंस्ट OTP स्कैम एंड ऑल दोस थिंग्स. तो ये वन ऑफ द फीचर है. यू कैन स्कैन द URL, कोई URL भी दे तो उसको भी आप स्कैन कर सकते हो इसमें, राइट. यू कैन स्कैन द QR कोड ऑल्सो. अब इसमें आ गया मॉडरेट, यू शुड नॉट go ahead with it. So this is the way which will help. So Ishan, you were showing something. So Ishan is my team member. He is OSCP certified. So OSCP is the highest certification in ethical hacking. So if you want to go for OSCP, you have to spend 3 days in the test. Test goes for 3 days. So it is very tough to pass that exam. So yes. This is the website. You put your password here and you check if your password has ever been leaked. Because आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, hacker सबका ट्रैक करेंगे. And most probably people will already know your accounts. And you can try for your Hub accounts, your Twitter accounts, and everything. I see that guy up, so I'm pretty sure he has some awareness. Moving on. Go back. क्या बोला आपने? अब तो आप लोगों को शक हो रहा है, इन लोगों ने किया, इन लोगों ने किया. So have you been called? You have already known. Now these are gadgets. Ishan will let you know about these gadgets. Hacking gadgets. तो आपको hacking tools तो पता है जो software tools are very much available, but there are some hardware tools which are available. This is to Ishan will let you know what. So how many of you are from ECE and how many of you are from Cyber? ECE से कोई है? Nobody from ECE? Great. So you know what Raspberry Pi is? I believe everybody knows what Raspberry Pi is. Very good. Similarly, boards बनाते हैं लोग, and what they do is they use it for malicious intent. As if you see there is something called as flipper over there, you can use it for physical intrusion. As in, आप as a hacker किसी building में घुस सकते हो, right? So I'll tell you a story where I use this. I did red teaming for UIDI. How many of you know what UIDI is? आधार कार्ड है किसी के पास? किसका है वो? आवाज भाई मेरे को लगा तो सो रहा है. सो गए? हाँ बोलो. हाँ मैं भी बोल रहा हूँ. आधार कार्ड है या बिना आधार कार्ड इशू होता ही UIDI. जब मैंने इसका रेड टीमिंग किया था, at that time Colonel Sandeep was there. He was the director for security. So what I did was, अगर जाओगे कभी दिल्ली में, सीधे में उनका ऑफिस है. They have this post जहाँ पे सारे CRPF के जवान खड़े होते हैं. They have this big machine gun. And me as a hacker, I had two objectives: get inside the building and hack the entire infrastructure. How I did it was, I had a card. And मुझे पता है लोग सुत्ता पीने बाहर आते हैं क्योंकि बाहरी शॉप थी. And they keep their cards in their pockets. मैंने कुछ नहीं किया, मैं ये लेके गया फ्लिपर 0
I scanned their card and I simply used it to get entry into the lobby. Lobby में entry किया, entry करते ही I simply asked the guard कि I am new here, I am new joining, this is my email and now I have to go inside to this section. Guard was a very good person, उसने मेरे को लिफ्ट में एंट्री दे दी because लिफ्ट आपका बायोमेट्रिक, ठीक है? लिफ्ट में मेरे को एंट्री दिया, I went to the main lobby, यहाँ पे सॉफ्ट की टीम बैठी है. Who knows what is a SOC? SOC, SOC. Who knows? SOC. Nobody knows. Related to the EC, it's like system on chip. This is actually blue team. SOC होते हैं वो लोग जो बैठ करके चेक करते हैं कि हैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो लाइव चेक करते हैं. I'll come to that also later on. So SOC team used to sit there. SOC is Security Operations Center. Yes, Security Operations Center. Thank you very much. So what happened was you can use this iCopyX, which is the black one, or you can use the Flipper 0. They both do the similar things only. I scanned their RFID card, I got entry into the building, I asked the guard to get me into the lift, I went to the main SOC lobby, wherein once I entered I saw an attendant computer. Now who knows what this ONG basic is? Anybody knows cable is for? We just demonstrated what it was. ONG basic, you know? ONG basic. It's a cable and within that cable you have a 8MEGA32U4 chipset which basically emulates a computer keyboard. What happened was I put my payload there and I connected it to one of the systems. I got a reverse shell. Reverse shell पता है किसको? Reverse shell, you know? Like you are from computer science. Just take the shell of the subsystem. He is saying something. To take the shell of the subsystem. Earlier it was about telnet. We can take. उस computer का एक terminal remotely मेरे पास आ गया. That is called a reverse shell. So I had a reverse shell for UIDI internal system. उसके बाद मैंने क्या किया? I simply जो अभी मैं दिखा रहा था passwords वाला section, I started cracking passwords left and right. I cracked the main password जो sir का था, Karan sir का. It was password at 123. I know you people find it funny, but believe me, when you get into the industry, you will find it password. अभी recently हम लोगों ने नीवा बुबा का किया रेटिंग. I went into their office A8 करके. I cracked their AD systems. मैंने उनके database file के अंदर flat डाला. C drive के अंदर flat.txt फाइल डाली. We were here. बस. That is evident enough कि कोई भी hacker पहुंच सकता है. So this ONG cable is basically like a mini keyboard. लगता के बजाय and you just have to make a story. You just have to put it कि connect करना है, मेरे को phone charge करना है, या मेरे को data transfer करना है. That's all. And you have to engage with that. By the way, have anyone ever seen what this thing is? मतलब किसी ने IoT का काम किया है? Anybody IoT? No. Okay. Then let's move on to the Wi-Fi looking thing. Okay. Wi-Fi looking thing. This is basically a Wi-Fi pineapple. What it does is ये evil twin attack करता है. Wi-Fi access points तो सबके घर में होंगे, right? अब अगर मान लो सेम दिखने वाला एक Wi-Fi access point हो तब क्या करोगे? कंप्यूटर कैसे रिकॉग्नाइज करेगा बताओ? Are you really from computer science? I am doubting now. No, they are very sharp-minded. से चुपचाप बैठे हैं, हमारी नॉलेज चेक कर रहे हैं. Anyways, so BSSID होती है, ESSID होते हैं, MAC एड्रेस होते हैं. MAC एड्रेस पता है, I hope ये तो पता होगा. तो वो इसको emulate कर लेता है. It will capture the MAC address, BSSID or ESSID, and it will emulate the CMAI and it will start an evil twin attack. Computers authenticate करते हैं automatically उससे और वो prompt देते हैं users को. What happens after that is we get the passwords. Password is a very big thing. आपको मिल जाए तो बहुत कुछ हो जाता है. For example, भाई साहब का एक common password हमें मिला, कोड देते, and how many applications if I try that same email ID password will I able to comment? Next one. Okay, so importance of cybersecurity in today's digital world rises. Why important cybersecurity important? So rising cyber threats and attacks
protection of sensitive data, safeguarding critical infrastructure, financial and reputational damage, growth of remote work and BYO, remote work has started nowadays after COVID. So they are growing nowadays day by day. So cybersecurity is required over there. Also regulatory compliance and legal obligations are also there, because nowadays every government organization has their own compliance. RBI has its own compliance. Power sector who generates power, they have also created their own cybersecurity compliance. Then insurance sector, IIT, they have their own compliance. अगर insurance company cybersecurity compliance को follow नहीं करेगी, so they will cancel their license. So that is also required. So that is also there. Then even in case of SEBI, stock exchange, where जहाँ share आप खरीदते हो बेचते हो, तो SEBI controls that. So SEBI has also introduced its own compliance, cybersecurity compliance. So that is why cybersecurity is important nowadays, and the demand of cybersecurity professionals are increasing day by day. Humongously, there are a lot of jobs in the market which are going unfilled nowadays in cybersecurity. So, rise of AI-powered cyber threats, building trust. Rise of AI-powered cyber threats have increased. Deepfake and AI is using a lot of things by hackers. So it has made hackers life easy nowadays. So that's why जब तक चोर होंगे पुलिस की जरूरत तो पड़ेगी, चोर भी उठते रहेंगे, पुलिस भी बढ़ती रहेगी. So that is why till the time hackers are there, cyber security professionals are always required, right? So building trust in digital transformation, right? So these are again the explanation of what I have already told you. I think cyber threats and attacks and protection of sensitive data is required. So this is okay. Again the interesting. Now you will keep on doing some practicals. So आप लोगों को जगाने के लिए कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी को फोन दे देते हो, कोई कहता है कि प्लीज मेरे को 1 मिनट के लिए फोन दे दो, मेरे को घर में फोन करना है, मेरे ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरा फोन बंद हो गया है या कुछ भी. तो उस टाइम पे हैकर अगर है और उसने आपका फोन ले लिया, सर आप 1 मिनट फोन दे देंगे उसने, इनमें डायल कर दो नंबर, मैं ठीक है. अभी घर में आऊंगा क्योंकि मेरा फोन हो गया. ओके, हाँ, तो now the hacker has talked and he has done some settings. Now you can, thank you sir. Now can you show this phone? Can you open WhatsApp? What? Gmail. Is it Gmail? So what happens is you need to have same network with any attacker. That's why IP is important. So what hacker will do at that time is, he will, when I was calling, I did some setting. इसमें मैंने उसका वाईफाई ऑन कर दिया और मैंने कुछ ऐसी सेटिंग की जिससे कि वो वाईफाई से उसकी डिबगिंग हो जाएगी. तो ये सेटिंग करने के बाद अब हैकर के पास पूरा कंट्रोल आ गया, राइट? अब कंट्रोल आ गया तो नाउ हैकर कैन डू एनीथिंग. अब ये इससे कनेक्ट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा. पहले अच्छे जीमेल, तो जीमेल मिल जाएगी. व्हाट्सएप, आई विल पुट अ कमांड फ्रॉम माय कंप्यूटर सिटिंग एट होम, sitting on the same place where that phone is available. तो उससे मैं सारा डेटा निकाल सकता हूँ, राइट? तो कभी भी किसी को अपना फोन मत दो. somebody says कि yes I need your phone, उसको स्पीकर फोन पे फोन करवा दो कि हाँ आप घर पे बात कर सकते हो एंड ये आपको फोन में अवेलेबल है. कभी उसके हाथ में तो he could be a hacker and he can use your phone. तो मैं आप ये बंद हो गया. So let us come to the next one.
So we were talking about offensive security, right? Offensive security is you are attacking, and defensive is the person is defending. Now offensive में what happens is there are lot many different type of testing which are available. Wherein first is penetration testing, ethical hacking, vulnerability assessment, red teaming, and social engineering. So, do you know what is social engineering? Anybody? You know? You basically try to know about a person, collect information about that person, and maybe manipulate them or collect information about that person, and then impersonate them or say a phishing attack on them based on information that you get. Great. So, Ishan told you about UIDA case, right? When he said I am the employee of this company, I want to enter. So that is social engineering. Yeah. So wherein he is trying to take control of a person using using his ready to have nature, right? So that is social engineering, and based on that, even you get some mails, right? Can you mail like this is you have filed your income tax, and you can take a refund of tax by clicking on this mail. So that is phishing mail which was shown to you, right? So that is also a kind of social engineering. It's a part of social engineering, right? So in penetration testing, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ सोशल इंजीनियरिंग में. लेट्स सपोज इनमें से किसी के पास SMS आता है योर वेरी गुड वीडियो हैज बीन अपलोडेड टू द हब एंड देयर इज अ लिंक. हाउ मेनी पीपल विल ओपन दैट लिंक? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. अब तो ये बच्चे समझदार हो गए, अभी आपके ट्रैक में नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन. Now, so that means given the propensity of risk, I hope everybody would be curious enough to open that link, right? What happens once you open that link? Naveen sir will show you. So you can take it as a basic hacker terminal, and you have opened that link. Now what happens is, I can read your emails. Gmail open हो गया, right? ये open the Gmail. Similarly, I can open WhatsApp also. I'll open maps only because the phone maps are the one. वो तो map open होना होता है. Likewise, जो मैं यहाँ से बोलते जा रहा हूँ, वहाँ से कमांड इनिशिएटिंग द कमांड और यहाँ पर एक खुलता जा रहा है. बस कैसे हुआ, मैंने इनसे फ़ोन लिया सिर्फ 15 सेकंड या 10 सेकंड के लिए और ये हो गया, तो कैमरा खुल गया. So this is a basic ADB, right? ADB शेल के थ्रू आपने किया, but what happens is जब कोई रैट आपके एप्लीकेशन में डाउनलोड होता है, मतलब आपके एप्लीकेशन में बाइंड होगा. किसी और को अपना फ़ोन कराना है. So this is for demonstration purpose. I'll tell you a story what happened. So by the way, I am a BA philosophy honors guy and I did masters in psychology. Now when I was doing my masters and when I was doing my bachelor's actually, nobody believed I used to be into hacking and all that. I had a friend named Goyal. Exam से पहले everybody stays in the same room के हम भाई कहीं से एग्जाम देने चले गए सब साथ में पढ़ेंगे, right? I believe everybody does that. मैंने एक बार ये ऐसी मजे में उसको बोला भाई अपना फोन दे, because nobody used to believe me कि मैं हैकिंग करता हूँ. बोले फोन में मेरे को कॉल करना है. Same story, got prepared. I simply it's something called as Metacritic or MSL Venom or Metasploit. You search Metasploit, it's basically a framework. You can make your own batch and everything. बहुत basic है. I mean, everybody can just look it up. It's very basic. उस टाइम पे I think Android 12 latest था, right? So
मैंने मेटामीटर से बनाया, मेटामीटर बोल रहा हूँ, ऐसे मैंने से बनाया एंड्रॉइड और उसके फोन में डाल दिया, उसको वापस दे दिया। हार्डली टेक्स 20 सेकंड्स में डाउनलोड है। एंड सिंस हम लोग मेरे दोस्त के वाईफाई नेटवर्क में थे तो आई हैड अ रिवर्स। उसके बाद उसका फोन लॉक था, राइट। I got to see his email, not exactly his email, it's WhatsApp के भाई तेरी मम्मी से WhatsApp नंबर आया है, एक बारी बात कर ली। And he was shocked, but he said nothing. After some time I told him, भाई तेरे को कॉल आया है, एक बारी देख ले। And after that he was like, तुझे कैसे पता? I then showed him something very strange. I asked him to put his phone like this, it was locked and I took a video. I showed him the video. उसकी literally बैंड बज रही थी, I cannot say the word, उसकी बैंड बज रही थी। So आफ्टर दैट होल नाइट पढ़ाई तो करना हुई, लेकिन भाई साहब ने से सवाल पूछ के एकदम मेरा दिमाग खराब कर दिया, कैसे किया एंड क्यों किया वाज वेरी सिंपल। सो क्यों किया इज वेरी सिंपल, जस्ट बिकॉज आई वुड सेम थिंग हैकर भी यही बोले, जस्ट बिकॉज आई कैन आई विल डू इट, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, मैंने उसको उसका पूरा फोन रीसेट करवाया। मैं मुझसे बता सकता था कि आप इसको इंस्टॉल करो, बट टू बी ऑन अ सेफर एंड कि भाई तेरे को मेरे को ना बोले मेरे में आपका उनसे पैसा कर दिया, पूरा फोन रीसेट करो। तो इसी तरह से 0 day exploits आते हैं। 0 day exploits सर ला रहे हैं, कैन यू टेल मी गेस यू विद द कर्ली लॉक्स, ब्यूटीफुल लॉक्स। सो लाइक जब कोई सॉफ्टवेयर है कोई वर्जन आता है तो उसमें कुछ ऐसे एक्सप्लोरर रहते हैं लाइक पर्सन और तो जो डेट मतलब पहले दिन जो फिक्स होते हैं 0 day exploits समथिंग। वेरी गुड आंसर, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर इट। वेरी गुड। तो ये 0 day exploits क्या होते हैं? एज ही सेड वर्जन रहेगा, पुराना भी हो सकता है, उस पे किसी ने रिसर्च किया, उसने वल्नरेबिलिटी निकाला और उस वल्नरेबिलिटी से वो एक्सप्लॉइट करेगा। सबसे रिसेंट बता दो, सबसे खतरनाक था एसएसएच, सबको पता है एसएसएच। एक चाइनीज हैकर था, उसकी आगे एसएसएच की गिटहब रिपोजिटरी में 2 साल पहले जाके कमेंट किया बैकडोर, और आज की तारीख में मतलब आई थिंक 2-3 मंथ है, उसके पास दुनिया के सारे एसएसएच सर्वर का एक्सेस था, जस्ट बिकॉज ही हैड अ बैकडोर। मतलब क्या सोचा होगा आदमी ने, क्या इनको पता है? I remember quickly specifically in the executants, not executants, exit library. Yeah. So it was in library that was common in many machines. Yes. Linux machines. So yes. अभी recent वाला Windows, how many of you use Windows? Guys, हाथ खड़े करो या हाथ कटवा नहीं रहा हूँ मैं तुम्हारे। Okay, so I believe majority of you have done Mac because I don't see many people using Windows. Mac है ना, तो सबके पास Ubuntu है, क्या है? आज में भी वैसे अगर कोई सोच रहा होता है कि मैंने Ubuntu डाल लिया तो वो बहुत सिक्योर है। नो, आपको पता है आप उसकी एंट्री फाइल को एडिट करके डायरेक्टली उसका रूट उठा सकते हो। सेम गोज फॉर मैक ऑल्सो। मैक में भी सिक्योरिटी है बट सिंस इट्स अ क्लोज्ड लूप सिस्टम। अभी रिसेंटली आई थिंक मैक में एक सीवी आया था एंड द गाय वाज अवार्डेड आई थिंक $30,000 रिसर्च करके उसने बग निकाला, $30,000 मिले बग बाउंटी में। तो यू गाइस कैन आल्सो ट्राई दैट। मूविंग ऑन। Okay. So advanced offensive security tools. So मैं बताता हूँ। Since I do rating, मेरा काम है कंपनीज हैक करना। तो में से कितनों के पास मारुति की गाड़ी है? गाड़ी चलाई है? मारुति का नाम सुना है? यार गाड़ी नाम तो बोलो, मुझे लग रहा है सुना है मारुति का नाम सुना है, गाड़ी नहीं। वेरी गुड। तो मैंने मारुति का रेटिंग किया था। R&D डिपार्टमेंट पता है कितना सिक्योर होता है किसी भी रिसर्च फैसिलिटी में? सबसे सिक्योर R&D डिपार्टमेंट होता है। एंड आई वाज एबल टू गेट द फाइल्स फ्रॉम दैट R&D डिपार्टमेंट। कैसे किया मैंने? वेरी सिंपल। मैं अंदर तो घुस गया क्योंकि बीइंग अ गाय आई कैन एंटर जब सारे लोग ही आदमी हैं, ठीक है। सो व्हेन वंस आई एंटर्ड इनसाइड द बिल्डिंग आई स्टार्टेड। उनका बहुत बड़ा कंपाउंड है, अगर आप मुझे हो गया तो जाओगे, इट्स अ वेरी बिग कंपाउंड। एंड once you start entering into the building, there is a section which is off limits and guard posting is there. And the best part is वहाँ पे guard जो बहुत friendly है। Again, guard बहुत friendly है, वो तो जो human link हो गया। इसके अलावा क्या है? From a technology standpoint, what they were using was a very old version of Apache Tomcat.
Now, if you see this post exploitation and password cracking, उनका AD सर्वर चलता है. AD पता है किसी को? Active Directory. Anybody? मैडम सर दिला रही है. मैडम मैं भी क्लास कर रहा हूँ. कोड पढ़ नहीं रहा. अरे अब कौन है ली मैं तो समझाओ. बेसिकली सिस्टम में किसका क्या रोल है, कौन क्या एक्सेस कर सकता है, यूजर ने पासवर्ड की लिस्ट. या राइट. ऐसे बोलिए यूजर ने पासवर्ड की लिस्ट. सो व्हाट हैपेंस, एक्टिव डायरेक्टरी में बहुत बढ़िया फीचर्स होते हैं और वो फीचर्स हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे कि पासवर्ड स्ट्रिंग, क्रेडेंशियल स्टफिंग जिसे बोलते हैं. सो मैंने बहुत बेसिक सा पासवर्ड दिया, हमारा दिस टू की लिमिटेड MSIL@123 and you would not believe I got the director's email password using this. Director. In वो मारुति में director आगे नहीं था, I got the email password. And since मारुति का director था, he had a VPN access also. VPN से I was able to get into his files, उसकी files में मैंने और research किया. I was able to get the latest R&D. मतलब जिमी जब आई नहीं थी, उससे 2 महीने पहले मुझे पता था जिमी आ रही है. So that is what happens when you start using tools. So tooling is very constant when you start doing stealth ops and red team. Tooling एक बार आप कवर कर लोगे, इसके बाद से आप अपनी टैक्टिक्स बिल्ड करते हैं. You guys भी IIT, I hope तुम आपको कवर करोगे. Apart from beautiful locks, I hope that is. Shan, I think you will get kidnapped. Like eating information is not इतना अच्छा है जो तुमने ब्रांड ला दिए हैं. Okay, so basic defensive security. So in defensive, what we do is we defend. तो उसके लिए क्या है? Security Operations Center. जिसमें कि we create a security operations center for monitoring of attack. तो एक पूरी टीम बनती है जिसमें कि we put different security analysts, right? वो क्या करते हैं कि एक अटैक को चेक करते हैं कि क्या क्या अटैक हो रहा है, व्हाट अटैक्स आर हैपनिंग 24/7 आई ऑन द सीन. वी पुट अराउंड if you want to they want to go 24/7, we have to put 4 to 5 or 10 or 100 people who will be working on shifts, different shifts, and they will monitor attacks 24/7. तो 24 घंटे वो मॉनिटर होते हैं और मॉनिटर करके भी दे कलेक्ट द डेटा कि कौन कौन से अटैक्स हो रहे हैं, उनको स्टॉप किया जाता है. स्टॉप करने के बाद उसको मिटिगेट किया जाता है कि कहाँ किस वजह से वो हैकर अंदर आया है, राइट. तो उन डोर्स को क्लोज किया जाता है. देन दे पुट दैट इन द ऑपरेशंस जो उन्होंने पैच लगाया. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इंसिडेंट रिस्पांस. इंसिडेंट रिस्पांस में क्या होता है? इंसिडेंट हुआ, उसने अटैक किया, कहां से किया, किसने किया, कब किया, इवन ट्रैकिंग ऑफ द पर्सन कम्स अंडर इंसिडेंट. इंसिडेंट हुआ तो रिस्पांस देना है, राइट. तो रिस्पांस देना है, उसको आपको रिपोर्ट भी करना है. सर्टेन को रिपोर्ट किया जाता है, राइट. इवन इन डिफरेंट कंट्रीज देयर आर डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज जिनको उस इंसिडेंट को हम रिपोर्ट करते हैं, राइट. देन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट. सो दिस इज अ टूल which is the major heart of the SOC. जब SOC बनाया जाता है तो उसमें SIM जो होता है वो ही लॉगिन करता है और वो ही चेक करता है कि कौन कौन से अटैक हुए हैं और सारी रिपोर्ट उसी SIM के अंदर ही होती है. थ्रेट इंटेलिजेंस एंड थ्रेट हंटिंग. इन थ्रेट इंटेलिजेंस व्हाट वी डू कि हम एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ. मैं एक कंपनी के पास गया कि उनको बोला कि वी वांट टू कंडक्ट योर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में बात होती है कि हम क्या क्या करते हैं ये वो. तो उसने मैं क्यों करवाऊँ आपसे, मेरे को क्या जरूरत है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का, इंटेलिजेंस टेस्टिंग, ISO 27000. मेरा तो कोई डेटा है ही नहीं होता. तो आप बताओ इसका आंसर. मैंने कहा ठीक है, इसका आंसर मैं 3 दिन बाद दूंगा. नाउ आई एम गोइंग. 3 दिन बाद हम आए पूरी रिपोर्ट लेकर. हमने जाके क्या किया, थ्रेट इंटेलिजेंस एंड थ्रेट हंटिंग की उस कंपनी की. इस कंपनी का डेटा इंटरनेट पे कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कितनी बार हैक हुआ, क्या हुआ. इवन हमने उनको कंप्यूटर पूरा कंप्यूटर का डंप हुआ पड़ा था उनका. कई कंप्यूटर में दिखाया देखो ये मिस्टर प्रकाश आपके यहाँ काम करते हैं, ये देखो इनका पूरा डेटा यहाँ पड़ा हुआ. और हैकर ने कब लिया, इस डेट को लिया, कौन कौन से पासवर्ड
है कि ईमेल आई है और ये आपका पासवर्ड है ना, मींस थ्रेट हंटिंग इज अ वेरी बिग साइंस। तो वो हमने की यूजिंग डिफरेंट टूल्स। और थ्रेट हंटिंग हम बिना कंपनी से वो भी हमें कंसर्न नहीं चाहिए था उसमें, क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, वो तो कोई भी ढूंढ सकता है। तो हमने ढूंढ कर वो पूरा दिखा। तो वो ऐसे हो गया कि अब बताओ ये होगा क्या नहीं। मैंने कहा आई आंसर योर क्वेश्चन, आपने मेरे से क्वेश्चन किया था, अब मैंने आंसर कर दिया कि ना आपने कभी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कराई है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ना कभी रेड टीम कराई है, ना आपने ISO 27000 इज द स्टैंडर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, वो आपने कराया है। ये इसका आंसर है कि आपने कुछ भी नहीं कराया और इसलिए आपका इतना डेटा हैक है। तो थ्रेट इंटेलिजेंस में वी फाइंड द थ्रेट्स, राइट? तो वो हमने ढूंढा और उनको बताया। तो दिस इज द सिंपल एग्जांपल बाय व्हिच आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज थ्रेट इंटेलिजेंस एंड थ्रेट हंटिंग। एंड नेटवर्क सिक्योरिटी एंड फायरवॉल्स आर ऑलवेज देयर, एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस। So endpoint detection and response, Ishan will be the best person. Ishan, are you there? Yes. Endpoint detection and response. So, तुमने किसी ने कभी वायरस बनाया? कभी सोचा कैसे बनता? सोचा है? अब कभी सोचा है कि जो बंदे बैठ के जैसे कैसे की लैब है और इन वर्ल्ड सब जो लोग बंदे बैठते हैं वो कैसे ढूंढते होंगे कि ये वायरस कैसे बना, कैसे बना? एग्जैक्ट आइडिया नहीं, बट सोचा है। It's called reverse engineering. ठीक है। So ideally everybody knows Windows में machine language क्या होती है, right? Assembly language, right? So what happens is आप एक सी फाइल ले लो, उसको reverse engineer करना शुरू कर दो। reverse engineer करके आपको कुछ key factors मिलते हैं कि for example ये DNS के थ्रू डेटा एक्सफिल्ट्रेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, स्टेगनोग्राफी यूज करके डेटा एक्सफिल्ट्रेट कर रहा है, x.com पे पब्लिश कर रहा है, जो पहले तो हुआ करता था, वहाँ पे पब्लिश कर रहा है फोटो और वहाँ से वो डिक्रिप्ट कर रहा है। सो दिस इज अ टैक्टिक, इट्स कॉल्ड TTP। अब जो एनालिस्ट होते हैं, मालवेयर एनालिस्ट, ये क्या करते हैं, पूरे के पूरे मालवेयर को रिवर्स इंजीनियर करते हैं। रिवर्स इंजीनियर करने के बाद वो TTPs बनाते हैं और IOCs बनाते हैं, इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कि अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो कैसे हुआ होगा या किस डेटा के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज हुआ है। एंड TTP होता है किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो वे TTPs क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। इट्स कॉल्ड माइक्रो अटैक TTP, ADT एंड Q। तो इसमें क्या होता है, दिस इज कॉल्ड थ्रेट इंटेलिजेंस। यू स्टार्ट डूइंग एनालिसिस ऑन अ मैलवेयर, यू पब्लिश योर IOCs एंड पब्लिश योर माइक्रो TTPs, ठीक है? तो ईशान so मैंने एक्चुअली मना कर दिया है, एक्चुअली वी कैन नॉट शो यू द SQL इंजेक्शन अटैक वी परफॉर्म ऑन IIT दिल्ली, IIT गांधीनगर। So I'm really sorry because अपन रात में बैठ के आई परफॉर्म एन SQL इंजेक्शन अटैक जिसमें मैं जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं सबका डेटा, एंड सिंस फैकल्टी एक पोर्टल है, उस पोर्टल के अंदर आई कैन टेल यू दिस एटलीस्ट इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ तो व्हाट हैपेंस इज ज्यादा इस बारे में हम बताएंगे। इंग्लिश ये है कि मुझे आपसे बातचीत मुझे आपसे बातचीत कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस दो है। एक तो ये है कि आप समझो कि साइबर में रिस्क क्या होते हैं, नंबर दो स्कोप क्या है, आप ये समझ के सीख के आगे बढ़ सकते हो, कोई भी एक्सपर्ट बन सकते हो अपनी सीख के एनर्जी के लिए। और किसी भी वेबसाइट में मैनेजमेंट डालना बहुत आसान होता है। चलो भाई। So AI versus human hackers. So human like AI is always better, but human are above AI because human have only created these AI. So if you talk about speed and efficiency, AI has its sense that AI can process and analyze vast amount of data within seconds. For instance, AI-powered systems can scan millions of medical records to identify patterns and suggest diagnosis faster than a human doctor. But what are human strengths? Human, while slower, can interpret data with
nuance and context, making decisions based on ethical and emotional considerations. You have something to So, say? मैं अच्छा चलो तुम में से कितने लोग AI यूज करते हैं? वेरी गुड, एटलीस्ट लोगों का हाथ उठा है। So उसमें से कितनी बारी तुम प्रॉम्प्ट करते हो डेटा एक्यूरेट आता है? नहीं हो रही? So now what was the situation, right? So मैंने I don't use AI every day, but मैंने experiment try किया है। I think वो problem I tend to find with AI कि like तुम्हारे question में गलती है तो बोलेगा नहीं। It will give some answer. It will always try to give some answer. But I feel like it isn't able to critically analyze what you're asking. Very good. Context basically वो मांगता नहीं है और उसके बिना ही आपको वो सॉल्यूशन देने की कोशिश करता है, right? So this comes in play जब आप actual सेललॉक या किसी भी तरह का टेस्ट कर रहे होते हैं, किसी भी तरह का हैकिंग कर रहे होते हैं। See, at the end of the day, if you want to become a hacker, you will have to either you are a malware developer or you are a researcher or you are a red team operator, something like that. So जब आप actually भी सेललॉक कर रहे हो, malware develop कर रहे हो या किसी भी तरह का टेस्ट डेवलप कर रहे हो, आपको जो डेफिनेटिव आंसर्स होते हैं, जो स्टैटिस्टिकल बेसिस पे आंसर दिए जा सकते हैं करेक्टली, उस चीज में आपको AI हेल्प करता है। बट जो क्रिटिकल नुआंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, मैंने विशिंग की थी। विशिंग पता है किसी को? विशिंग तो पता है ना? विशिंग क्या होता है? सेम चीज ओवर फोन कॉल। तो VoIP पता है किसी को? एनीबॉडी VoIP? वेरी गुड। VoIP इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, हम डायरेक्ट फोन करते हैं फ्री या पेड सर्विसेज के थ्रू, जिसमें मैं आपका नंबर चेंज कर सकता हूँ कॉल करके। सो एट दैट टाइम व्हेन आई डिड दिस, उस टाइम पे विशिंग इंडिया में बहुत सही तरीके से चल रही थी। तो आई कॉल्ड अ गाय, एक कंपनी है ऑयल एंड गैस की, लेकिन हम टेलीग्राम, इट्स अ वेरी वेरी बिग फर्म, उसका मैं विशिंग कर रहा था एंड गलती से मेरे पास एक नंबर आता है जो उनके सीसो का है, ठीक है, एंड माइंडस वो सीसो, उनसे मैंने बात की IT से, I just Nishan, and from IT XYZ company, and I just recently saw that your account was logged in using a Russian IP. अब Russian IP में सबसे पहले आदमी चीज क्या सोचता है कि किसे हाथ में लगा है। His next step was he gave me his PS number, and apparently उनका जो PA थे वो आगे और जो 6 सीसो मतलब 6 बोर्ड मेंबर्स थे उनका भी अकाउंट को हैंडल कर रहे थे। जस्ट बिकॉज एक का मैं कॉम्प्रोमाइज कर पाया, मैंने दूसरे का भी कॉम्प्रोमाइज किया और आगे 6 का कॉम्प्रोमाइज किया। तो दिस इज अ क्रिटिकल नुआंस जो आपको AI से नहीं मिलता। दैट इज व्हाई इवन इफ यू ट्राई टू यूज AI इन योर सेललॉक, you need to have that manual validation, or you need to have that manual check कि whenever you are using or whenever you are trying to exploit anything. Now, if you try to exploit, or if you start to try writing a shell code, AI will do a better job than you. But again, उसमें भी bad characters, magic characters, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैजिक कैरेक्टर्स तो नहीं समझ में आ रहा, पूछो तो सही। मैजिक कैरेक्टर्स पता है किसी को? वेरी गुड। तुम में से किसी की तुम्हारा सॉफ्टवेयर बनाया C++, C#, जावा, कुछ तो बनाया होगा, कभी तो बनाया होगा। आपने बनाया? तो जब तुमने C में बनाया तो तुम्हें पता होगा, अच्छा इंटरप्रेटर डिजाइन पढ़ाई किसी ने, कंपाइलर डिजाइन इसको पढ़ाई होगा। तो जब कंपाइलर आपके C कोड को कन्वर्ट करता है और उसको इवेंचुअली बाइनरी में पैक करता है, उस टाइम पे कुछ चीजें होती हैं, कुछ स्पेसिफिक टोकन्स होते हैं जो वो राइट नहीं कर सकता, क्योंकि वो टोकन पहले से रिजर्व होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हेक्स में अगर समझाओ 0x00 विच इज नल बाइट, 0x09, ठीक है, इस तरह के कुछ स्पेसिफिक टोकन होते हैं जो वो नहीं यूज करता है, वो बैड कैरेक्टर होते हैं या फिर उसको बोलते हैं मैजिक कैरेक्टर। तो उसके बेसिस पे आप एक्सप्लॉइट बना सकते हो, उसके बेसिस पे आपका पूरा का पूरा शेल कोड खराब हो सकता है। So that is where you will have to validate, क्योंकि वो तो आपका ये नहीं करता, right? So like speed and efficiency we have talked, adaptability, then emotional intelligence, creativity, design making. So adaptability, if you see, humans have good adaptability. Emotional intelligence, yes, you understand emotions better than AI. राइट, अगर आप किसी से बात करोगे, वो AI अगर बात करेगा तो वो
इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाएगा, राइट? So then creativity, yes, AI has its strength. They are very creative, but they work on the predefined database. They have their own existing database and all. But humans की creativity अगर आप hacking में देखो creativity, तो जो humans कर सकते हैं वो AI नहीं कर पाएगा, as far as humans are concerned. Decision making, yes, AI makes decisions based on the data and logic, free from emotional bias. Wherein human decisions often involve ethical, cultural, and emotional considerations that AI cannot replicate. Right? So I already told about me. Why students should learn cybersecurity, future-proof career. Cybersecurity is an ever-growing field with increasing job opportunities. As I already told you, there are numerous jobs in market. Freelance and remote work. Ethical hackers can work independently and earn from bug bounty programs also. So, if you become an ethical hacker, you don't need job. Bug bounties are there always. आप Microsoft की साइट पे जाओ या Facebook से इतनी बड़ी-बड़ी bug bounties निकालते हैं, वहाँ पर आप एनरोल करो, उसके बाद यू स्टार्ट अर्निंग. हम इतने स्टूडेंट को हमने एंटरप्रेन्योर बनाया है, वो करते हुए फीस भी निकाल देते हैं सारे, क्योंकि they earn lot of bounties through those bug bounty programs. तो उनको जॉब की जरूरत नहीं, पढ़ते भी वो अपना कमाते रहते हैं. करोड़ों रुपीस people have earned like this. Protect yourself and others. Learn how to secure personal and business data. Multi-industry demand is there, always there, and no age bar, no education qualification. Ethical hacking is a fun, hands-on skills like hacking, penetration testing, and security audit. So there is no age bar. If you Google today that who is the youngest hacker in the world, he is a 5 years kid who is the youngest hacker. So cybersecurity as a career, high demand for cybersecurity professionals. The global cybersecurity market is expected to reach $376 billion by 2029. 3.5 million cybersecurity jobs will be unfilled worldwide by 2025. So these are unfilled. You can understand. So exciting paths are ethical hackers, and you can become cybersecurity analyst, penetration tester, security consultant, digital forensic expert, and GRC consultant. Right? So various jobs in cybersecurity. I have already told you these are the jobs and these are the packages people are getting. Highest paid bug bounties, I told you. Facebook gave $1.1 million for an account takeover vulnerability. Google $605K for major Android exploit. Apple $500K for zero-click iPhone exploit. One person has found he got that bug bounty. I have told you about bug bounty right now. So Tesla, it has given $350K plus for a major system vulnerability. Then live bug bounty leaderboard, then check hackathon and bug cloud are ranking for this. Student success stories. So I have some students for which I have some success stories. Like there is one person whom we trained. He is now in ANZ Bank, and one person is in Adobe in US. Nowadays he is working over there, earning million of dollars, and even I have some more people who are, someone is in Qatar and one is in Dubai, and there is one person who is in KPMG. He has become director in KPMG. He was my student only. So these are the few success stories, but there are a lot many more which are there. So our cybersecurity programs, like we have 4 hours workshop where we give quick overview of cybersecurity, ethical hacking basics, and real-world case studies. We have 3 months of program also, hands-on training in cybersecurity fundamental, ethical hacking, and malware analysis. 6-month program also we have advanced topics like penetration testing, incident response, and network security. 12 months program also we have, which is comprehensive certification with practical experience preparing students for top cybersecurity jobs. So there are a lot many certifications included which we get you
done like CES, CSAI, OSCP, CSSP. So how cybersecurity knowledge empowers every professional? Like you, some of you must be aspiring to become software developers, right? You are aspiring to become software developer. Now, software developer, if you get a normal software developer job, you may get some good money. But if you want, exorbitant money and you should get some extra bucks, then you should become secure coder. Secure coder means who knows security. If you add security, cyber security with your profession, you will become, if you see over here, software developer was earlier time. Nowadays it is secure coder. Earlier, network engineer. Some of you must be trying to become network engineer, but now you have to become network security architect. System administrator was the old term. Now people will become system security admin, because cyber security is required for all of you. If you go to any of the profession, you will have to, if you add cyber security with you, that will add, feather on your cap, right? So, cloud engineer, now it is cloud security specialist. Product manager, now cyber aware product leader. QA tester, earlier they were QA tester who used to check the quality assurance of the software. Now they are security testers, right? Security testers. Finance executives like cyber aware CFOs. Legal professionals are now converted to cyber law consultant. Even if you go to HR, which are non-technical profession, they are also getting trained on information security, cyber security. Inside, they become insider threat mitigator, right? Marketing executives, they are privacy first digital marketer. And health professionals, they are nowadays data guardian. So, treat the patient, protect the data too. So, if you have any question, you can ask, right? And if you, we have some questions. Can we convert hash value to original text? Can we convert hash value to original text? हाँ, तो इसमें तरीका तो होता है. What happens is you have a dictionary of words, and using that dictionary of words, you try to compare the hashes of the. You need to know the algorithm first. Once, for example, let's say identify a hash. So हम लोग identify hash करके हम start करते हैं. NDNS for example, अगर कुछ भी करो basically NDNS करो लागू, तो identify hash मिलेगा. identify hash का आप comparison करोगे नए words, for example, password at number 3. You try password at 1, उसका hash बनाकर दोनों का hash compare करो. So this is one way. The other way is you start composing each and every character, alphabet each and every character, and actually character. It is a resource taking time. For example, मेरे पास एक ये मशीन है, मैं उससे बैठ कर ट्रैकिंग करता हूँ. Usually एक और चीज़ के वर्ड है एक क्रंचेस विलेज मशीन. So if you have the resources, you can definitely try. Otherwise, I will just go for this. उससे जल्दी मिल जाएगा आपको, जैसे महीना मिल जाएगा आपको. और उससे पॉसिबिलिटी एक और चीज़ है कि आप 10 के एक्सप्रेस चला सकते हैं. Because at the end of the day, you know that you need to have process to just need to have. So, what I will always is never trust. Always. Never trust. Never trust. Yes. So this is the mantra you got today, right? So, what is the difference between information security and cyber security? What comes first, information security or cyber security? Firstly, to see तो जितने भी लोगों हम मैंने दिखाए थे उनमें इसीलिए याद रखना और जॉब किया. ठीक है. So information comes first. Right? If I say, can I get your credit number? So he is not sharing because this is the information I am asking first. Can I get your email ID, your bank account number? No. So I am asking this. After this, I will go to cyber attack. I will go to, cyber means internet.
information can be on a piece of paper, can be on your laptop, on your pen drive, and even in your head. In your head, you have a lot of information. So if you leak that information with the hacker, he will take advantage of it. फिर वो cyber attack का है. Then he will use what is cyber security? Where cyber security comes into picture, where your offline information is connected to internet. Let's say your laptop is connected to internet. Now, whatever information in the laptop has to be taken care by cyber security, right? So cyber security, information security comes first. After that, cyber security comes into picture, right? Okay. So never trust. Yeah. Thank you. Thank you very much. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको पीपीटी सब दिखाने का. मैं सिर्फ एक जगह जा रहा हूँ लास्ट में. ये एक सर्टिफिकेट हम देते हैं आप सब लोगों को जो बड़ा इम्पोर्टेंट है. इसके अंदर IHR और यूएन सबके नाम लिखे हुए हैं. ये फीडबैक का स्कैन करोगे तो इस तरह का ऑटोमेटिक मिल जाता है. लेकिन इसमें एक इशू है कि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हो तो फीडबैक फॉर्म काम नहीं करता. आप बाहर पेपर पर जाओगे तो ऐसे पेपर्स पड़े हैं. इसमें नीचे वाला रजिस्ट्रेशन का है. अगर रजिस्टर हो तो फीडबैक डालो, नहीं तो रजिस्टर करके फीडबैक डालो. थैंक यू वेरी मच. और मेरे कार्ड पड़े हैं, आप दे सकते हैं. कोई भी सवाल जाओ तो पूछ सकते हैं. आई विल रिक्वेस्ट प्रोफेसर समीर आगे फॉर द वोट ऑफ थैंक्स.
Talking about the volumes of cases that are there is no justice. It's not even brought to the court of justice for 98% of the cases. It's huge. And every day these volumes of the crime, cyber crimes are increasing massively. And that puts us in a question mark to say how much are we aware in the first context about what it takes as a cyber crime. But what is it that we need to know about the cyber security is the first. And this is where this program was intended, where we get to have first information, what it takes. And also, like what Dr. Naveen mentioned, there is a huge scope which people at this point don't know in terms of how it is going to be shaping the future. And in fact, the numbers that Dr. Naveen shared in the slide, saying so many of the positions are unfilled. And you'll be surprised that last year, the government of India certainly said that every institute should have CISO and deputy CISO positions filled by 2024. And in the premier education institutes, these positions are not yet being filled. IIMs, IITs, these positions are not yet being filled. And that shows the situation that we are currently in with respect to the awareness of cybersecurity. And had we had this maybe 10 years ago, the situation would have been different. And that is where I have to praise and laud all efforts that Professor M.P. Goyal, the team here, is trying to bring and make this like we should never be behind in this cybersecurity. And that's where I would like to thank each one of the team members here who took this pain to come here, address us, and bring this awareness. And we would want to contribute back by saying that we now are aware of few things and we would like to take this forward and make sure that we build a cyber-safe world to the best extent that we can. So with this remark, I would like to again thank each of you who are here. And let's hope we'll have these sessions coming forward in subsequent time and make it a grand success. Thank you.